Good morning, everyone. Wish you a wonderful trading day today. Happy and with lots of profits. Let's see how we are lined up today. Where are we? 18,863, 18,870. Nice. Nice. Bank Nifty. 5-minute settings. Alright. Yesterday I had given a indication, or rather the market had told us that there are trend change times at. Let's draw this again today. RBL Bank crossing 175. ये हो गया, ये हो गया, ये price calculation. We have 1145. Then we have this is finished. Delete. What about this? Yes. Yeah, 1055. And we have okay, 1150 and 1240. Okay. For that I have this. What about this? I have 940, I have 1155 or 1055. Okay. Now today for today's times I have 940. Then I have 1045. 1045, 1050. Let's draw the
That's better. Was 940. Yeah, 940. 940. 940. Lock. I don't know, one more. 1050. 1050. Ask, please. Question. I'm just waiting for the first initial euphoria to settle down. And in the meanwhile, as the euphoria, because I had some other plans, so I did not do much analysis last evening. So I was just tied up with something else because today was not supposed to be a holiday. I mean working day, 11:50. 11:50 है ना? 11:50. Lock. What about you? Lock. What will be your answer if Nifty directly go to 18,400? Meaning? I'm not clear what exactly you are asking about. PFC crossing 210. There are a few shares which are going up, stocks. So, which are 1240. Okay. 1240. Look. Yesterday or day before?
No, I am not sure. Sorry about the morning silence. I'm not sure what exactly you are asking for. Because what exactly you are asking? Because I don't remember what I said yesterday. So can you tell me what is it? The question is this: what will be your what will be your answer if Nifty directly go to 18,400 as per your target? You mean 18,400 or 19,400? Why?
I explained yesterday also. My view won't change like that. Why should I change my view? You guys tell me. 1 second. This is the scenario. Do you see any reason why I have to change my view? This is the daily Nifty chart. Do you see there is a need to change the view? Just about 15-20 minutes. Rahul, I am waiting for 9:40 p.m. 9:40 a.m. sorry. When I could be bearish at this point in time. Who's that? Parth. Why should I not be bearish here? Anywhere under this line, I am bearish. And even if it goes above this line, so 19,100, anyway, this is a call which I am taking that this market is formed out a toppish formation. Now, do I want to capture this last 100 points? I don't think so. Most of you forget that I have been long and my view was bullish all the way from here to here. I did not turn bullish here or somewhere here. I was bullish all the way from here. So there is a lot of profit that I am sitting on. I am happy with giving up a little to capture this. So every time, even when I captured this or captured this or captured this, when the date comes, I will show you the exact calculation of the date. Coming of all-time high in opening candle, short squeeze and exhausted, typical personality before reversal, high probability of top dancer. Already bole raho, we are almost at the high end of the point, high end of the range. There is not much there. I have already said that we are in the top, we have almost topped out. अरे फैजल को उड़ाओ. Mayur, put him on silent. नहीं तो मेरे को ही करना पड़ेगा. चलो ठीक है, हम ही करते हैं. बता दिया ना. Two days back, I did such a deep analysis. क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? कल भी तो किसी ने ट्विटर पे सवाल पूछा. What was the question? The question was, are we not trading with vertical in this ABC pattern, which is, aren't we supposed to go to trade above the crossing of the moving average? You are no longer, you are looking at the main move. See, all those, many have asked this question, can I not trade this one up here and all? But
Now the main point here is, sorry, let me change the chart, then I'll be able to see. Many have said, can I not trade? Why should I not trade this one? Sure, if I had caught it, I would have traded. Honest to God answer. मैं ये अभी पकड़ में नहीं आ रहा है, मैं देख भी नहीं रहा हूँ. Why? Because of this. Because ये सब देखते बैठूंगा तो मेरा ये मेन ये मिस हो जाएगा. So this is what is the best thing I feel is to be traded right now. Sorry, this is this ending diagonal is the best thing to be traded right now. Maybe some will abuse me, maybe some will find my analysis wrong and all of that, true. But I will continue to stick to what has worked for me. I will continue to stick to what is the right way I feel, because that ये मूव पकड़ने में, which is ये 2 दिन पकड़ने में, 3 दिन पकड़ने में, people make the biggest mistakes in their life. And once it starts, then you get caught on the wrong side very quickly. So do I want to do it? No, I don't want to do it, because since we are almost at the fag end here, I don't want to catch this. And there are quite a lot who are looking at this as a breakout. 22 साल का ये 2 साल का breakout निकलेगा यहाँ से. Breakout नहीं निकल सकता is my clear view, because of what has happened here. What is this pattern come out of? What is it? So now when we see, yesterday I had shown this is an ABC, this is a 3, 3, 3, 3, how logically it makes sense. So now all that having made sense, I have no doubt that ultimately इसका resolution कहीं जहाँ भी अभी आएगा, आ जाएगा कल, या फ्राइडे को आएगा या मंडे को आएगा. 1-2 दिन आगे पीछे, it will not be a big question, because once it comes, you are caught on the wrong side of this market. So my whole effort is not to get caught on the wrong side of the market on the larger chart. या इधर में 20 पॉइंट 30 पॉइंट गलत भी हो गया, चला 40 पॉइंट 50 पॉइंट भी गलत हो गया, 100 पॉइंट भी गलत हो गया, तो इतना टेंशन नहीं है. जब यहाँ पे अगर गलत होते हैं ना, तो बहुत पैसा निकल जाता है. दिस इज thousands of points. So even if it decides to come only till the yellow line, you are looking at least 17,800. 1000 पॉइंट तो निकाल ही देगा. 1000 पॉइंट यहाँ पे कब निकाल देगा मालूम भी नहीं पड़ेगा. 1000 पॉइंट यहाँ पे कब निकालेगा. So that is the point. And another thing is, post the ending diagonal, action in the market is always very fast and very steep. So anybody who's caught on the wrong side post the ending diagonal is in a dangerous situation. मैं फंसा हूं इससे पहले, तो अब मुझे उस उस प्रॉब्लम में मैं फिर से वापस नहीं फंसना चाहता. I have lost, you can't even imagine how much money I have lost. I'm talking way back in 2000, आज से 23 साल पहले. उस टाइम में 55 लाख रुपए एक दिन में खोया था. वो छोड़ दो, वो सब अलग बातें हैं. So I don't want to get caught. I don't want to get into that pain. कोई भी कुछ भी बोले, because of my experience and my pain which I have known, understood what this pattern can give, I am ultra cautious. यहाँ पे आपको आज समझ में नहीं आएगा. When at this bottom, when I have said that there is no need absolutely to be bearish here, but this market is going up, it was a different one. Now, if there are elite wave people here, you will understand this is not clearly what is unfolding an impulse. This is clearly, right now it is showing what is called a double zigzag. So what is going to happen? इसका result, end result तो एक ही है. ये एक दिन आगे जाएगा, एक दिन पीछे जाएगा, ये नहीं है. ये पैटर्न जो खत्म हो रहा है, ये तो पूरा ऑल द वे फ्रॉम 27 अप्रैल 2021 से लेके जो पैटर्न बना रहा है, ये पैटर्न इधर खत्म हो रहा है. दिस इज अ मल्टी वीक,
a multi-week large pattern. When it finishes, see the maja. If you are around. If you feel like trolling, most welcome. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. वैसे ट्विटर पर पड़ा हुआ है और एक few more will get added on YouTube. That's all. It doesn't make a difference at all. There are people who are making a big error here. But since that is how this market is supposed to work, or this market works, कि ultimately वो आके आपको कहीं ना कहीं बहुत बुरा फंसाएगा in this pattern. अभी आया 940 को, I would go short and I would keep a stop loss at 898. I would go short. Intraday trade करना is pure intraday. I would go short here. मार्केट ऊपर आएगा नीचे जाएगा वो मार्केट को देखने दो. Thank you, Arvind. I am glad. If it helps you, I am happy. The only thing I feel bad about is people with myopic vision, जिनको आज अभी का अभी exactly अभी चाहिए. So let's see. Will the market shake off people, or will the market decide to come down? Whatever it decides will be very clear very soon. What am I waiting for? I'm waiting for now that 940 with this stop here. I'm just waiting for this simple trend to end. जितना आपका श्रद्धा है उतना ट्रेड कर लो. जिसने ट्रेड किया, नहीं करना है मत करो, which is also fine. को बड़ा करते हैं, इसको उठाते हैं, इसको लगाते हैं. ट्विटर ले जाते हैं. एक डालना पड़ेगा उधर.
Mod 360, if you go back, I have even gone a little deeper in one of the live trading sessions. I think the very first day or the next day. One of the two. It's already there. But apply किसने किया? किसी ने apply करके date निकाला? सिंपल क्वेश्चन है मेरे दिमाग में. मैं इधर ये 50 पॉइंट पकड़ूं कि ये देखूं and be extremely cautious. Simple question. Even if it is live trading, I should not get into positions at the end of what I feel is the end of the trend, larger trend. गुरजीत सिंह वालिया, हाँ जी, एग्जैक्टली, वो पहले ही बोल के बैठा हूँ. Everyone, see, all these smaller changes in the pattern, the everything is happening only because we are at the end of it. So does it really make a difference? मैं 27th को बोला, 28th को बोला या 30th को बोला? Go one step at a time, सब हो जाएगा. आवरली पे मॉड 360 नहीं चलता. करके देख लो, इट वोंट वर्क. Why it won't work? There are different reasons, because you are not understanding where that mod 360 is actually coming from. Mod 360 is actually coming from the sun's movement, sun, S-U-N, sun. It won't work on an intraday basis. I had shown that day, even on timing solution, how the planets were positioned, what is happening. You're welcome to go and see that video again. अरे बस बहुत डेट है, बहुत डेट है, क्यों चिंता कर रहे हो? Major dates which are there.
Yeah, it is the last of this. It is the last price movement of this entire wave. I don't. Okay, you have to understand a few things here, Rahul. When you are doing these calculations based on the planetary movement, what happens is there is, let me give an example. I don't know how many here are aware of or have access to this tool of mine, the trig method. So based on this was one level where we got the trend change, or sorry, the price level, and then we got this 25th April ka price. What did the market do? Market went away on 21st April. This was the low. 2 दिन बाद में my trigger had given, the trigger method had given this. Then I got this price level, and ये जो vertical line है, I got this price date. What was the date? The date was 17th May. It came after 2 days on 19th May. Then I got the other price, higher price one here at on this date. Where did I ask people to go short? On this date. Okay, this is here is what I called the end of the. I think I called on this. Did I call on this bar? No, I called on. I called on this bar, 23rd June. Okay. और ये बार खत्म होने के बाद में मैंने बोला अब खत्म हो गया. वाई वी आर जस्ट 1 or 2 days अवे. अब एक दिन बाद में आएगा, 2 दिन बाद में आएगा, इज जस्ट it's a matter only of academic interest. But what did we have when we had this? We had one date here, one date here, one date here for it to do ABCX, ABC completely to finish the whole thing. Whatever pattern would come later. But these were broadly the points which I had. This is broadly the points which I have, and one more point I have is somewhere here on the 1st of September 2023. By then I expect this to come down. Similarly, you can see if I go here and start apply the same tool, give me similar ones. यहाँ पे टॉप लगा है, यहाँ पे टॉप लगा है, ये इधर आके इधर टारगेट दिया था जब ये यहाँ से ऊपर आया. So has it made a difference to my trading? Will I change my style just because 1 or 2 days market has gone up or down? I don't. I will not. जो भी बोलता है तो उनको करने दो, ये लास्ट 200-300 पॉइंट में फंसने दो, अपन देखते हैं बाद में. अरे तोड़ के तो दिखाओ, ये लाइन तोड़ के तो दिखाओ, उसके बाद में बात करते हैं ना. लाइफ इज नॉट, इट इज नॉट एज सिंपल. आज सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं. ये ऊपर तोड़ के गया तो क्या होगा? जब तोड़ के जाता है तभी देखते हैं, जल्दी क्या है. नाउ एक एग्जांपल देता हूं. सेम पैटर्न किसी को दिख नहीं रहा है. दिस वाज इन, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वर इवन ट्रेडिंग. Simple question. Here is a ending diagonal. Here is one ending diagonal which came later. Okay. इसमें और आज जो निफ्टी पैटर्न बना रहा है, उसमें डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस क्या है? Ask yourself the question, डिफरेंस क्या है? Even here, I was saying ये मार्केट बहुत बड़ा गिरेगा, बहुत गिरेगा, बहुत गिरेगा. आज बोलते हो हाँ आपको पता था कोविड है. इस दिन किसको पता था लॉकडाउन आने वाला है जनवरी में? Did anybody even dream in January 2020 that there will be a worldwide lockdown about 2 months later? बीस जनवरी को क्यों गिरा मार्केट? Big question. So here if I had warned you somewhere here we are very close, we are very close, we are very close. अब एक दो दिन ही तो बचे हैं, एक दो दिन ही तो बचे हैं. एग्जैक्टली एक दो दिन ही बचे हैं. तो यहाँ पे वार्निंग बेटर है कि ये गिरने के बाद बोलो ये वार्निंग बेटर है? विच इज बेटर? Will you want to trade on these 2 days? सर 50 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, सर 50 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, मेरे को 50 पॉइंट ये आने वाला है नेक्स्ट. This kind of bar is coming. Suddenly you will wake up one fine day and you will realize, अरे ये मार्केट तो 200 पॉइंट नीचे खुला, 300 पॉइंट नीचे खुला, 400 पॉइंट नीचे खुला. Can you imagine Nifty opening only 3% down? Give me a reply. How much is 3% down on Nifty today? आफ्टर बोल के क्या फायदा? अब ये इधर भाविन भाई इधर आने के बाद में मैं बोलूं ओ मेरे को ये पता था ये एंडिंग डायगोनल है, अभी ये लाइन तोड़ दिया, यहाँ पे अभी शॉर्ट करो. अब नाउ यू विल गेट दिस आंसर ऑल्सो. जब ये लाइन तोड़ेगा ना इधर आके समवेयर अराउंड हियर, आपको रिप्लाई मिलेगा हाँ लाइन ब्रेक कर दिया, सपोर्ट टूट गया, अभी नीचे जाएगा. तो उस यहां पे आपको 17,700 पे अगर कोई बोले तो क्या बोलोगे उसको? इज दिस वार्निंग हियर बेटर और इज दिस वार्निंग हियर बेटर? हाँ. सो if Nifty opens only 3% down, you are going to lose 570 points on a single day. Are you ready for it? अगर आपको ध्यान में हो तो yesterday we were talking about I was talking on the telephone call. 18,600 का put is available for 100 rupees. Today it must be available even 100 rupees, even lower than that. Okay. So now if it is less than 100 rupees, what is people are expecting that if he is selling it to you for 70 rupees, for example 100 rupees पकड़ते हैं राउंड फिगर, 18,600 का पुट आपको 100 रुपीज में बेच रहा है, तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या है? ये मार्केट 18,500 के नीचे नहीं जा सकता. That is too much confidence in the market only going up. Way too much confidence. That is showing the हाँ रविंद्रा थैंक यू 90 रुपीज हो गया. ठीक है. तो कैन दिस मार्केट नॉट ड्रॉप डाउन 300 पॉइंट्स?
That too after this extended price move from all the way from 16,800 to 18, almost 19,000. 18,900. अच्छा, someone asked me, ये डेट मिलता है? ये क्या डेट है इधर? Everyone has this view, डिफरेंस है, डिफरेंस है, डिफरेंस है. भाई डिफरेंस अगर है तो आप ट्रेड करो ना लॉन्ग. इधर क्यों आ जाते हो झगड़ा करने? ये डिफरेंस है, वो डिफरेंस है, ये ऐसा है, वैसा है. आई एम गिविंग यू माई व्यू. आपके मेरे झगड़ा करने से और आर्ग्यूमेंट करने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता. इधर आके जितना भी बोलना है स्टेटमेंट, आई हैव मेड वन स्टेटमेंट, डू आई स्टैंड बाय इट? यस. यू आर मेकिंग ए काउंटर स्टेटमेंट. इधर भी देखो चैट में एक के बाद एक आके ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. क्यों भाई? डू इट, डू. आपको लगता है तेजी है तो ट्रेड करो ना लॉन्ग साइड. आपको किसने रोका है? You want to make money or you don't want to make money? See, how many people will buy it here today in the morning when it went up? There are many who will buy. Yesterday also there were many who had bought here when the market showed. That it went up in the evening is a secondary issue. In the morning, what happened? All those who bought in the morning, in early morning spike, they got caught. Okay. Even if they did not caught, they made some money. So what is the market doing? Think what is the psychology the market is setting you up into. It is setting you up into thinking that whatever happens, I will keep going up, I will keep going up, I will keep going up. मार्केट आपको बोल क्या रहा है? द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क इटसेल्फ इज व्हाट इज योर आइडिया? व्हाट इज द आइडिया ऑफ ऑल ऑफ दिस? गोइंग अप कंटिन्यूअसली, टेकिंग डाउन एंड देन गोइंग अप. यू आर बीइंग सेट टू, इट डिड द सेम थिंग, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप. क्योंकि इसके बाद क्या हुआ पहले मालूम पड़ा. सो यू हैव ए जस्टिफिकेशन हियर. अदरवाइज गो बैक टू जून 2020 एंड टेल, इज इट पॉसिबल? जून 2020. ट्रोल्स को बहुत मजा आता है. When I went here, यार अभी ये मार्केट खत्म हो गया. पीछे चले जाओ, 27 अक्टूबर को बोल दिया था ये मार्केट खत्म हो गया, 14,200 लग रहा है. Rajiv Bhaumik, all those are excuses. Is it because IV is low, that is low, this is low? Simple question. Keep it very simple. Very simple question. Simple question is, you are selling a 18,600 put for 90 rupees. When will the seller start losing money? He will start losing money the minute Nifty hits 18,500. Is that clear? IVVV को तेल लगाओ, वो सब डेरिवेटिव है. So now you have to ask yourself the question, can this market hit 18,500 in 1 month? अगर आपको आंसर उसका हाँ है,
18,500 के नीचे जाने का चांस है अगर लगा आपको, देन इट इज अ फैंटास्टिक ट्रेड. अगर आपको नहीं लगा तो यू विल सेल. सो depending on whether you are a seller or a buyer and what the market does, the reward will come. ये बाकी आईवी ये था, ये वो बढ़ गया, ये एटीआर था, वो था, उससे ऑप्शन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. Can the market move 3% in a day? Ask yourself the question, has it moved 3% in a day? Ask yourself the question. Then you have the answer. This is still an inside bar. The whole thing is inside bars. ये और एक मैजिक है. ये 2008 का फॉल है. ओके, एक सेकेंड के लिए इसको हाइड कर देते हैं, ये भी हाइड कर देते हैं. ये 2008 का फॉल है. फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम Why is it not like 2020? How are you qualified to say it is not like 2020? ये स्टेटमेंट ना सुनते सुनते 45 साल मेरे पक गए, बाल मेरे सफेद हो गए. 50% सारे नहीं हुए. इट इज नॉट लाइक 2008. 2020 में भी यही सुना था. एंडिंग डायगोनल बोला अरे 2008 जैसा सिचुएशन नहीं है. क्यों नहीं है? मेरे को पैटर्न, आई एम ए टेक्निकल एनालिस्ट, आई एम नॉट लुकिंग एट फंडामेंटल थिंग्स एट ऑल. क्यों नहीं है? दिस टाइम इट इज डिफरेंट. हाउ वाज इट डिफरेंट? 2 महीने बाद में पूछा, अभी लगा कुछ डिफरेंट? बोला सही बोलता था यार, सही बोलता था. ये फॉल कितना था? नाउ लुक एट दिस चार्ट हियर. ये 2008 का टोटल फॉल है. 6,300 से लेके 2,200 आ गया था. कितना परसेंटेज गिरा? उस टाइम में गिरा था इतना. Can you imagine market can fall that much? Now this is not too long. This is only 14 years away. Sorry, 14, 15, 16 years away. Anybody had this kind of fall आएगा किसी expectation था? अच्छा, अब ये कितना पॉइंट गिरा? बराबर 4,104 पॉइंट गिरा. दिस टुक 9 months. जनवरी से लेकर अक्टूबर.
ठीक है, 4104 पॉइंट मिला। अब मैजिक देखो, डेट लेता हूं और यहां से डेट कैलकुलेट करते जाता हूं कैलेंडर डेज में। तो ये जो टूल है इसका, इट विल गिव यू नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ बार्स। नंबर ऑफ डेज, यहां तक आया, ये आगे चलते हैं। 4104 चाहिए अपने को नंबर। तो एग्जैक्ट ये हाई पे लगाते हैं ये अपना बार। कितने डेज था? नहीं समझेगा बट मैजिक तो दिखेगा। आप कैलकुलेट कर लो टाइम एंड डेट कॉम में .com पे ये कितना डेज है। अब मैंने किसी को बोला, मेरे को 2008 में पता था इधर आके ये बड़ा डिप मारेगा, सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। जितना पॉइंट गिरा उतना डेज लिया ना, नेक्स्ट हाई थे, मेजर हाई, उसके बीच में 60% का करेक्शन आया? नहीं आया। फिर यहां क्या 12,000 से 8,000 आया, कितना परसेंटेज गिरा? So the same things keep happening again and again and again and again and again. So if you calculate, you will get a date of 30th July from somewhere, 30th June from somewhere. Will I wait till 30th June? नहीं बाबा, उतना टाइप ये प्रेसिशन चार्ट पे दिखता होगा पर इतना प्रेसिशन ट्रेडिंग में नहीं हो सकता। व्हाट एम आई डूइंग, 2 दिन पहले से हो गया भाई, बंद करो खत्म करो, बंद करो खत्म करो, चालू है। तो यहां भी गाली सुना था, क्या तो हाई लो 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 बोल रहा है, बेरिश बेरिश बोल रहा है, मार्केट तो गिरने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके बाद में ये डिप आने के बाद में एक बार वापस फरवरी में एक बाउंस आया, इधर तो कितना गाली मिला, नॉन स्टॉप गाली मिला। कुछ भी चालू है तेरा, कुछ भी चालू है। Even on February 1st, there was no information that there could be a lockdown. Whole world going into a lockdown. यहाँ भी इंफॉर्मेशन नहीं था, whole world going into a lockdown. मार्च में जाके जब इधर आया कि country started it, India was the first one to go on a lockdown on 24th of March. No, not 10-15, 10-15, ये इधर बार डाल के रखा है ना आज के 4,
Next one is at 10:50. So I'm just doing time pass till then. 10:50 ये sideways ही जा रहा है, देखते हैं क्या करता है. एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये हाई से लेके ये लो कितना पॉइंट है? यहां से 2192 डेज आगे बढ़ो, आपको मिलेगा. अब मैं कूल क्रिकेट आपको ये सब बताऊंगा, ये डेट्स कहाँ से आए, तो बाकी सारे ट्रेनर आके सुनेंगे. आपको क्या लगता है ये लाइव स्ट्रीम वो नहीं सुनते? सुनते हैं. बैठ के कहाँ क्या बताया, एक भी पॉइंट मिल गया तो अपन उसको देख के अपना ब्रह्म ज्ञान करके दिखा देंगे दूसरों को. क्या किया मॉर्निंग से निफ्टी? नथिंग. If you're learning something new, audio is fine. Everything is fine. I have not done anything here. लाइव में दिक्कत होगा कि नहीं होगा देखते जाओ. अपना बैड लक समझो, आपका बैड लक समझो कि हम लाइव ट्रेडिंग चालू किया. क्या डेट को चालू किया? आई थिंक आई स्टार्टेड 19 जून. आई स्टार्टेड हियर. ठीक है ना? ये हुआ ये पूरा कंप्लीट. ये टुडे इज द 10th. 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन हुए. ठीक है ना? ये 7 दिन में इतना है. यही हुआ, जहां थे वही खड़ा है. ये जब ऐसे प्राइस मूवमेंट आते हैं ना, तब देखना हाउ बुलिश एंड हाउ एग्रेसिव आई विल बिकम. द मेन मोस्ट मनी इज मेड फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर. मार्केट विल टेल यू.
I don't know if I will do. I am thinking because there are quite a lot of people who have asked for the indicators workshop. But I will take only 30 students in one workshop or one webinar. So I may do one sometime. Pata nahi. Second week of June or second week of July or third week of July. I will do one more on the indicator. Actually, there are a lot of things in the indicator which are to be studied, which are to be understood, which will give you a much better idea of what is happening in the market. ये हो गया है, अब खत्म होने को हो गया है ये. Why खत्म होने आया? If you know the periodicity, you know it is खत्म. लास्ट 20 पॉइंट 30 पॉइंट 40 पॉइंट इसके लिए लड़ना करो तो. Let us not discuss about the webinars and courses here because this is not the forum. I am not in. I teach because I love to teach. I share because I like to share. Even though this is a free live stream, I am showing whatever I think I should show. There is no question of paisa mila, nahi mila. So, yes, I hold back on some things because then it becomes unfair for those people जिन्होंने पैसा देके वेबिनार में आया, मैं उनको जो सिखाया वो इधर फ्री स्ट्रीम में सिखाया, तो आप इट इज अनफेयर टुवर्ड्स टू देम आल्सो. ठीक है ना? सो लेट अस नॉट डिस्कस. ये स्पेस नहीं है वो डिस्कस करने के लिए. ये फोरम नहीं है कि वेबिनार के सीट बेचो, ये वेबिनार करो, वो वेबिनार करो. मत करो. उसके लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं जवाब दूंगा ना. इसको क्लियर ट्रेडिंग एंड जनरल डिस्कशन ऑन ट्रेडिंग, ऑन जनरल डिस्कशन ऑन हाउ वी कैन अंडरस्टैंड डीपर एंड डीपर अबाउट मार्केट पे रखते हैं. I may not give you all the secrets. I will show you some, but other things you can learn by yourself. जितना नॉलेज बढ़ाओगे उतना मार्केट आपको पैसा रिटर्न देता रहेगा. $180 points up after so many gaps. मेरा व्हाट्सएप नंबर यार, इट इज अवेलेबल पब्लिकली. थोड़ा देख लोगे तो आ जाएगा. फिर भी ये लो. भेज दिया. हाँ, आ गया. If you like all the things that I'm sharing, give me more likes. I am also a human being. I thrive on appreciation.
Haji, Haji, thank you. Thank you so much, Vedrat. I'm honored. अभी तो क्लास पहले मार्केट गिरने दो फिर देखते हैं. Can option buyer make money? Yes, option buyer can make money if he is sensible about trading. But problem, like I said, you should also know when to not trade and when to sit silently. Like this is one of those times when you should not trade, you should just sit silently. Why? Because there is too much confusion here. That is why. So wait and wait when we get clear trends. That is the best time to trade because you will multiply your money manyfold. So option buyer, can he make money? Of course he can. Simple है. जब ये मार्च में इधर टर्न हुआ था पता था आई वॉज ऑल्सो स्क्रीमिंग ये ऊपर जाएगा 19,200 लगाएगा इफ आई हैड बॉट 17,000 कॉल्स ऑफ जून जुलाई अगस्त इवन दिसंबर वुड आई बी मेकिंग मनी
Same, sir. No change. Absolutely no change. We are setting up exactly like 2020 top. The decline will also be like 2020 top. The decline will also be like 2020. And
So sorry, all those who are sending me messages on WhatsApp, I will only reply to you by evening, not now. So JSW Steel crossing 788. $19,000 put. आप डीप इन द मनी लीप्स डीप इन द मनी लोगे तो बहुत महंगा मिलेगा भाई साहब. If you are looking at September puts, if I am taking, I would take 18,500 puts, or even below that. I would even go as low as 30-40 रुपए किसका रेट है देखो, सितंबर या दिसंबर पुट. ये पहले एनएससी इंडिया पूरा देता था, अभी नहीं देता है.
market data, derivatives market, equity derivatives. एक्सपायरी डेट लीप्स चाहिए. 17 सितंबर 17K का 40 के पास. 17 के बहुत नीचे है. We are looking much more. 16 is too low. NSE 50 options. As of expiry date filter है क्या? Expiry date filter तो है ही नहीं. Index options Nifty 28 June 28 June सब 28 June क्यों दिखा रहा है? अरे फिल्टर का है इसमें. July 18 200 P near 35. That is too risky to take. 18 200 means you want 1,000 point decline. तो उसके बाद में पैसा. That is a gamble. Lottery ticket. 17,000 17,800 at 54. कौन सा महीने का है ये? मेरे को कुछ 17,800. ये फिल्टर कैसे होता है ये? We need a ooh la la, ooh la la, ooh la la. We are at 99, 100, 99, 100. Wow. 1, 2, 3, 4. Still lower. Will you turn? Now you are. You have to. 18,500 August 135. That's worth it, Rahul Yadav. That is okay. 50 of them will cost you about 6,000 rupees. 18,500 August. That is good enough. 17,500 is a little too low. 18,500 August 135 seems good. See, for 100 rupees, you are getting an extra addition of 1,000 rupees between Rahul and Babaji. डिफरेंस देख रहे हो आप? 100 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो, लेकिन आपको 1,000 रुपये पहले इन द मनी हो जाएगा. So 18,500 is an easily achievable target in 60 days, and you can go below that. को एक एग्जांपल देता हूँ. When
In 2020, when market was trading here at 125 rupees, around here, we bought 11,700 था ना, 10,500 puts December at 175. ठीक है ना, वो 3,000 रुपये देके गया था. हम तो वेट भी नहीं किया एंड तक. 3,000 रुपये मिला, बहुत हो गया, स्टॉप्ड इट. So you will get something similar to it now. Conditions are perfect. 18,800 put at July 132. If you can afford it, take it. It will start showing action instantly. 18,019 at 260 also is okay. 18,800 at 132 is also okay. 19 at 260 is giving a better return. I mean, better value for money. So, chalo. आ गया. Question is 1050 to when. 1050 to when कुछ नहीं होता है, इंट्राडे है. If you are taking a trade, keep your stop loss here. Stop loss का multiple 1:4 पकड़ो. जब ये 1:4, 1:3 मिल रहा है, exit out of the trade.
अमीर शशांक, अगर आप देख रहे हो तो क्या हो रहा है इधर? मयूर भाई, जो ट्रेड अपन नहीं लेते हैं वही ट्रेड जहाँ लगता है ट्रेड होगा। यह है, ऐसा ही है नसीब अपना। एनालिसिस के साथ साथ नसीब भी चाहिए। No, Bank Nifty is slightly different today. I have not been looking at Bank Nifty at all today so far. But one second, let's plot on the Bank Nifty. What is it saying? Yeah, it can work on Bank Nifty plus or minus 5 minutes.
Why this? Why are you doing this pattern here? What is the logic? A C X A B C double X A B C X. No, this is clear. A B C 1 2 3 4 5. Okay. So what exactly are you doing here? What exactly are you doing here? 1 2 3 4. No, this cannot be a 4. If this is a 4, then what is this 3 here? This is ABC. Okay, ABC X. ABC. ABC. 1 2 3 4 5. ABC. 1 2 3 4 5. So, going to finish? Are you running flat? You are running flat. Then this is the only thing available. Are you running flat? You be a running flat. A, B, C. That's okay. Now this is fine. Suresh Babu, don't make this generalized ones. Himanshu, please go back and check yesterday's live trading session. I have explained the logic of a late wave and why they are the only patterns you should be studying in the market, because the other things don't make sense. Can you be this? If you're this, the whole thing doesn't make sense. Here is a 5, here is a 5. Can't explain this. A, B, C. No, can't explain. Can't explain. Can't explain. Too complicated to explain. ये भी नहीं हो सकता. ये भी नहीं हो सकता. है क्या? Some kind of corrective, but what exactly? 1 2 3 4 5 net retracement नहीं है. One, two, three, four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Can't be. What the hell are you doing? Just not able to find out.
Oh, no, no, I was checking something else. So sorry. I was lost. I was checking something else. Ah, what is the market doing? 1, 2, 3, 4, 5. Are we here? We are here. We are way beyond the high of the day in Nifty, not in Bank Nifty. Interesting. Let's see. The 5-minute chart. This was the extreme high of the day till 10:30. Nothing is posted. So extreme low of the day 9:30, 10:10, 10:30, 10:45, 11:30.
Hello, Sachin. None of them is producing something big. So what will happen is at the end of this, something big should be produced somewhere. समथिंग बड़ा आ ही रहा है वैसे तो कोई डाउट नहीं है आ जाएगा कि परसों आएगा इज द ओनली क्वेश्चन वैसे तो 30 तारीख का अपना डेट है परेशान करते हैं इसको What's the use of life? Absolutely. कोई यूज नहीं एब्सोल्युटली कोई यूज नहीं कभी कभी पेशेंस से बैठना पड़ता है दिस इज वन ऑफ दोस टाइम्स आई बिलीव पेशेंटली बैठना पड़ेगा थोड़ा जहां मिलेगा वहां बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रेंड मिलेगा जो बहुत लंबा टाइम तक चलेगा एंड उस ट्रेंड में कई बार अप डाउन खेल सकते हैं फिलहाल तो ट्रेंड इज नॉट गोइंग एज एक्सपेक्टेड एंड एनीवे रिपीट कर रहा हूं वापस They are expected trend change times today. They are not, so far have not been working. Every day in the morning, I keep putting this expected trend change times today. Most days, market moves exactly. So far, all these bars have only been green. The only two times that they have actually shown some reddish bars have been only these 2 points. So, in a very twisted manner, it is working. But
truly not producing what we are expecting. I am expecting a complete decline. I don't analyze, I look at price and chart. What you want to do is your choice. मीनिंग को उसका कोई वैल्यू है नहीं, ऐसा लगता नहीं है. It's the only thing I can think of. But उस केस में it is not a net retracement.
Right now, I am not doing any courses, anything. I'm just taking everything easy, life itself easy. Just for information, I am sort of adha retired. I just enjoy my life, relaxed. टेंशन नहीं लेना है मुझे. My point, कौन है ये वुल्फ वेव ब्रेकआउट? एटीन नाइन एटी 18,980 क्यों? ये 19,000 आ गया. कहाँ है ये? हाई क्या है? 18,965 आ गया ना. 15 पॉइंट में क्या फर्क पड़ रहा है? यू आर टॉकिंग ऑफ अ मल्टी मंथ, मल्टी वीक, मल्टी ईयर हाई बीइंग पोस्टेड. मार्क माई वर्ड्स. multi-year, multi-day, multi-week, multi-year, multi-quarter high being posted here. ये जो भी पकड़ेगा, if he just keeps holding that position, he will make a ton of money with a very small position. Because the movement from here is going to be extremely big. So we are on a multi-year, see, ये 2 साल का है, ये पैटर्न 2.5 साल का है. वीकली चार्ट देखोगे तो ये पैटर्न ऑलमोस्ट 10 साल का, 14 साल का है. मंथली पैटर्न देखोगे तो ये जो पैटर्न बन रहा है 1 2 3 4 5 वाला, ये कुछ ऐसा चल रहा है. 1 2 3 4 5. ये पैटर्न कुछ ऐसा चल रहा है. तो ये जो भी पकड़ेगा, दिस इज अ मल्टी ईयर, मल्टी वीक, मल्टी मंथ पैटर्न. ये पैटर्न का जो एंड होगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी टेस्टेड एट लीस्ट फॉर 2 to 3 years. That is the idea on that is the view on such a large pattern. एक्चुअली इधर आना चाहिए एग्जैक्ट पॉइंट्स. ये इधर, ये हर्षद मेहता, ये केतन परेख, ये लेमन ब्रदर्स. इधर आना चाहिए, ये इधर आना चाहिए. अनदर थिंग, जब भी वेव होता है तो पिछले वेव का 4th वेव तक रिट्रेस करके जाता है.
तो ये खत्म होता है तो इसका रिट्रेसमेंट यहाँ आएगा और कहाँ आएगा देखना पड़ेगा. When it comes, we will know. We will not know many things today. Comes. Yes, sir. आज के एक्सपायरी 19,000 का पी. हाँ. अरे नहीं खेल. अरे नहीं खेलना है, लॉटरी है, वो लॉटरी है. बेचना भी नहीं है, लेना भी नहीं है. क्योंकि अगर देखो, अगर निफ्टी 150 पॉइंट अप है, अगर ये डिसाइड किया, मैं पूरी बात समझ लो, अगर ये डिसाइड किया कि मेरे को नीचे जाना है, अगर ये डिसाइड किया मेरे को नीचे जाना है, ठीक है ना, वो सीधा 150 पॉइंट 2 मिनट 5 मिनट में उड़ा देगा. दैट इज द काइंड ऑफ पैटर्न दैट वी आर लुकिंग एट. वो जब भी नहीं लगता है तभी होते हैं. हाँ. हाँ. फॉर एग्जाम फॉर. हाँ. हाँ, बेचने के हिसाब से बोल रहा हूं. इसको इधर इधर बाय थोड़ी करोगे. मैं तो बैठा हूं बेच के. हाँ. हाँ. जुलाई महीने में 19,000 के नीचे आएगा, ये लग गई शर्त. हम्म. हाँ, बेच सकते हो, पर अभी क्यों कर रहे हो. 3:15 बजे तक वेट कर लो ना. हाँ. लाइव में लाइव में मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूअसली, नॉन स्टॉप एक ही चीज रट के बोल रहा हूँ. आगे पीछे मेरा चेंज नहीं हुआ 3 दिन से. मेरा कमेंट्री, ये जहां घूमेगा वहां पतलून निकाल के ले जाएगा. ओके. सो नाउ एक ही पॉइंट है ट्रेड करने के लिए. एक ही पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है. पॉइंट इज अभी कितना बजा, 12 बज रहे. इसको जो भी खेलना है शायद 3 बजे तक खेलेगा. ओके. या उससे पहले देगा, कहीं कहाँ देगा वो थोड़ा मुश्किल है एग्जैक्टली, बिकॉज वो ट्रेंड चेंज टाइम आज चल नहीं रहा है, क्योंकि ये बड़ा लार्जर साइकिल खत्म हो रहा है. ओके. तो वो बड़ा लार्जर साइकिल प्लस और माइनस 1 और 2 डेज चलता ही रहता है. यहां बेच के आज का एक्सपायरी पूरी सुन लो. यहां बेच के आज के एक्सपायरी में और 50 पॉइंट ऊपर बढ़ गया तो आप अननेसेसरी स्ट्रेस में आ जाओगे. ठीक है ना. था तो वेट फॉर 315. अब बेचो और देख कल के लिए वेट करो, क्योंकि वो ज्यादा बेटर. 3 बजे डबल बेचने का. अरे भाई, ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर पीछे से खड़ा है, हाँ 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 हाँ, ये जो जो ट्रेंड लाइन खड़ा है बहुत इंपॉर्टेंट है.
सबका एक्सपेक्टेशन है ना 19,000 आज लगा देगा, इसीलिए तो आया 963 तक। हाँ देखो, आप अकेले नहीं हो, पूरा पूरा कंप्लीट मार्केट 19,000 देख रहा है। और इवन सीएनबीसी वाले वो तो केक विक बना के, यूनिफॉर्म बना के तैयार रखे है। हाँ, ये देखो 1150 का टाइम है, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए। तो देखो छोटा छोटा अगर स्टॉप लॉस चाहिए तो इधर ट्रेड बन सकता है, बनने के लिए बन सकता है। हाँ हाँ हाँ, बनने के लिए बन सकता है। 971 अभी सब 19,000 देख रहे रहा, लॉलीपॉप दे के लेकर गया तो वेट 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 वेट, एक काम करो, अगर नीचे में आके, ओ बाप रे इतना ऐसा मूवमेंट करके बैठा है आज, बड़ा मुश्किल है। अच्छा ऐसा, अच्छा ठीक है, आने दो, बोलता हूँ, आने दो आने दो। हाँ ठीक है, चलो आने दो आने दो, या टर्न आएगा वहां बोलता हूँ। पेशेंटली वेट करो, एग्जैक्ट प्लस और माइनस 10 मिनट्स में टॉप पकड़ेंगे, पेशेंटली वेट करो। हाँ ठीक है, हीरो जीरो। हाँ, सही बात है, चलो ओके, बोलता हूँ, सही बात है, ओके। अच्छा ठीक है, ओके चलो, राइट। सही है, देखते हैं, आने दो, ठीक ठीक ठीक, आने दो, टाइम आने दो बोलता हूँ। ठीक है, आने दो बोलते हैं। ठीक, आने दो, देखते। बहुत, हाँ, चलो चलो ठीक है, देखते। अरे क्या, मेरे को भी फंसा दिया तुमने, आपने, सॉरी यार। जब जल्दी जल्दी करवाए, जल्दी करो, ये गिर गया, खत्म हो गया, क्या कर रहे हो? ये ट्रेंड लाइन लगाने जाएगा, कहाँ से लो टूटा। आप लोग ना मेरे को गलत करवा दोगे। ट्रेंड लाइन, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक समवेयर हियर, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक समवेयर हियर इन, हाँ। अरे अक्टूबर 2000, अक्टूबर 21, दिसंबर 22, ट्रेंड लाइन। हाँ, अरे 19 अक्टूबर 2021 का टॉप और 1 दिसंबर 2022 का टॉप, दोनों का वो जो ट्रेंड लाइन है ना, वो ट्रेंड लाइन टेस्ट करेगा ही, वेज कंप्लीट करेगा। एग्जॉशन गैप है, वेज कंप्लीट करेगा। नहीं होगा, नहीं होगा, पब्लिक वेज ब्रेकआउट बोल रहा है ना,
पब्लिक वेज ब्रेकआउट बोल रहा है ना, तो नहीं, वेज ब्रेकआउट नहीं होगा, फॉल्स ब्रेकआउट देके मारेगा. You got, I am saying you got me worked up early. That's all. अरे मजाक कर रहा हूँ भाई. मजाक. अच्छा, दिल में लग गया, सो सॉरी. दिल में लगता है, सो सॉरी. अरे चिल मैन, दिल में लगता है, सो सॉरी. और बोलो, अब मेरे लिए इतना करना ही पड़ेगा आपको. तो फिर हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया. अरे हमारे को छेड़ने में मजा आता है. अब इतने साल में अपने को नहीं जानोगे तो फिर कैसा चलेगा बस. बट एनीवे, लुकिंग लाइक अ डबल zigzag फ्रॉम द बॉटम. यूरेनस का क्वार्टर साइकिल ऐसा नहीं होता है. यूरेनस का क्वार्टर साइकिल इट कंटिन्यूज फॉर अबाउट 2 months, मीनिंग द एंड कंटिन्यूज फॉर 2 months. कमाओगे, कमाओगे, पेशेंस रखो, भयंकर कमाओगे. अब ट्रेड मत मारो. अभी सीरियसली ट्रेड मत मारो. एक काम करो, जुलाई 19,000 पुट कितना है देखो. जुलाई हाँ, इन द मनी कितना, 20 रुपए तो इन द मनी है. हाँ, कितना है? 189. मतलब 200 पॉइंट नहीं गिरेगा यहां से. हाँ हाँ, the only thing working in my favor right now is we are what? The trend line is at 19,035. अरे छोड़ो यार, कैलकुलेशन इंडियन निफ्टी से होता है, वो छोड़ो. ये सिंगापुर निफ्टी नहीं चलेगा. 35 पॉइंट दूर है, 35 पॉइंट दूर है. I am giving it 35 points plus throw over के लिए another 50 points. ये सब हाँ, 3 तारीख को गिफ्ट सिटी का लॉन्च होगा, उसके लिए ऑल टाइम हाई. ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बात करते बाद में. नॉन चार्ट रिलेटेड अपने से बात ही नहीं करने का. वो उसके वजह से ये होगा, इसके वजह से ये होगा, वो सब नहीं चलेगा. आई डोंट बिलीव. हम्म 3 तारीख तो परसों है. वेरी गुड. सी ठीक है, तो देखते हैं.
वही तो, हाँ एग्जैक्टली, वही बोल रहा हूँ, 19,050, 35, 50 पे आ रहा है। वही कर। अरे इधर पब्लिक तो अभी बहुत बहुत जल्दी वहां तक भी जाने नहीं देंगे। अरे यार हर बार ये भाग जाता है। ये ऊपर क्लोज दे दिया तो मैं भाग जाऊंगा। वही होगा। एंड दैट इवन इफ यू आर लुकिंग एट 19,200 इट विल बी ओपनिंग स्पाइक। हाँ, it will only be an opening spike on 30th or third. One of the two. हाँ हाँ हाँ। आपको क्या लगता है, मार्च से लेके ये जून तक ये ऊपर लेकर आया? एंड अप्रैल मई जून फुल क्वार्टर इट हैज ओनली बीन अप बाय ऑलमोस्ट अबाउट मोर देन 10%, 12%। हम्म हम्म हम्म। करेक्ट करेक्ट। हाँ। हम्म। 18,000 July is for 20 rupees. 18,000 July is for 20 rupees. तो फिर चलो मेरे को लेने दो। मेरे को लेने दो, इधर लाइव में भी पब्लिक देख रहा है। लेने दो। हाँ हाँ, लेने दो। ऐड कहाँ से करते हैं? निफ्टी पीई जुलाई कहाँ है? जुलाई 6 जुलाई नहीं से वीकली नहीं, मंथली। वही होगा ना सर्वेंद्र, और कौन? मैंने अभी तक बाय नहीं किया। अरे जुलाई का डेट क्या है यार? जुलाई 27 है क्या? हाँ, 27 JULY। अरे 27 नहीं है? 27 ही है ना?
18,000. Nifty PE 27. $18,000 space 27 July. Nifty PE 27 July. High low open, high low asking. क्या है भाई, वॉच लिस्ट में ऐड करो. Watch list to 18,000. 2380 बाय 21 रुपया डालो. 21 रुपया नहीं आएगा, 4 रुपये में क्या रखा है. हाँ हाँ, not a bad buy yet. पता नहीं बाकी कौन है, मैं तो 3 दिन पहले से बेरिश व्यू में बैठा हूँ. You will always notice I am the first one to change the view. $982, $857. Are you going to be the breathtaking fall? Don't know. If you are, चलो भाई. Has met all the conditions that is required. देख I called it on Friday, and market has. I called it on Friday. 2-3 दिन पहले. On the spaces itself, I said हो गया, अब क्या देख रहे हो, बचा कुछ नहीं है, देखते हैं क्या होता है. अगर होता है तो मैं हीरो, नहीं तो मैं जीरो. इधर हीरो जीरो कॉल करते हैं ना, अपन ने भी लिया हीरो जीरो वाला. ये बहुत सिंपल एक लॉजिक और एक है. अगर ये 1 2 3 4 5 है तो इधर एक 1, इधर एक 2, इधर एक 3, इधर एक 4 और ये लास्ट 5. Let me blow this up on a 5-minute chart, then maybe clear.
or it can even be from here somewhere, but I am only looking at it from here. तो इसको डिलीट करके यहाँ पे if we consider only an impulse, ओके, अगर ये है तो ये एक, ये इधर एक 2, इधर एक 3, इधर एक 4 और इधर एक 5, ये खत्म अगर है, एंड इफ दिस इज द लास्ट 5 ऑफ द 5, देन यहां तक तो बहुत फास्ट आना चाहिए. इट हैज टू कम इन अ स्ट्रेट लाइन अगर लार्जर पैटर्न भी यहां पे खत्म हुआ तो. सो दिस इज ऑल द लॉजिक. ये तो 5 मिनट का चार्ट देख के ट्रेड किया. जब भी डेली चार्ट देख के ट्रेड करेंगे तभी वो डीप, एक्स्ट्रा डीप वाला सोचेंगे दिसंबर का. फॉर थिंकिंग अबाउट दिसंबर वी विल हैव टू लुक एट एक्स्ट्रा डीप वन. आई मीन फॉर द डेली चार्ट एंड अ वीकली चार्ट. सी, ये मंथ अभी खत्म हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, शिफ्ट टू मंथली चार्ट. ये मंथ अभी खत्म हो जाएगा. ये मंथ का लो किधर है? इधर है, 18435. ओके, वीकली देखेंगे. ओके, ये वीक का लो तो इधर ही है ना, 18651. सो 1900 से 1851 डेढ़ पॉइंट ये है, एंड 150 पॉइंट. एंड ये 150 पॉइंट जब तोड़ेगा तो टारगेट तो पहला ही इधर ही आएगा. तो 1500 पॉइंट देने वाला है, तो 150 का स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा बड़ा पोजीशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बड़ा इन नॉट टू बड़ा, 150 के हिसाब से 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो. सपोज यू हैव 150 पॉइंट, सपोज 5 लाख का पोर्टफोलियो है, तो 5 लाख का पोर्टफोलियो में 2% होता है 10,000. 150 डिवाइडेड बाय 10,000, 150 डिवाइडेड बाय 10,000 इज 10,000 डिवाइडेड बाय 150 इज सम 6-7. तो 6 लॉट निफ्टी लियो तो 300 लॉट निफ्टी रहेगा. 300 लॉट निफ्टी अगर 1,500 पॉइंट दे जाएगा तो 5 लाख रुपए हो जाता है. तो एक ही ट्रेड आपका जो 5 लाख का पैसा है वो उसको डबल कर देगा. सो दैट इज हाउ आई लुक एट इट. सो ज्यादा ट्रेड्स नहीं चाहिए. प्लस लेट अस से ऐसे ट्रेड्स ढूंढना है, पूरा काम इसी में है. वो दी बिगर मनी इज नॉट मेड इन समथिंग लाइक दिस. Suppose you find trades like this continuously, you are able to find these kind of larger patterns. इसको 3 महीना लगा, ठीक है. तो आप मान लो हम चालू कर रहे 1 लाख से. ऐसा प्लान करके वेट करके ट्रेड मिला तो मान लो 3 महीने में पैसा डबल होगा. ओके, तो 3 महीने पैसा डबल होगा, तो 3 महीने बाद में क्या होगा? ये 2 लाख होगा. फिर उसके बाद में फिर अगले 3 महीने में ये 4 होगा. काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स, 2 टाइम्स. देन थर्ड टाइम इट विल बिकम 8, फोर्थ टाइम इट विल बिकम 16. ओके, फिफ्थ टाइम इट विल बिकम 32, सिक्स्थ टाइम इट विल बिकम 64. ओके, seventh time it will become 128. Eighth time it becomes 256. Now 256 is what? 100,000. You got to have patience. This is possible. 1 lakh can become 2 crore 56,000, 56 lakhs. It can become, but इतना पेशेंस चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, स्टडी चाहिए. इज दिस पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल. हैज इट बीन डन? यस, इट हैज बीन डन. द अदर डे आई वाज शोइंग 1:8 वाला 4 वाला ट्रेड लोगे. सपोज यू टेक एवरी ट्रेड विद अ रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:4. ओके, 5 करेक्ट निकले, 5 गलत निकले, तो 5 जब भी करेक्ट निकलेंगे तो 5 का स्टॉप लॉस होगा.
₹5 का, 5 जब भी करेक्ट निकलेंगे तो 20 का प्रॉफिट होगा, नेट नेट 15% गेन, दोनों के बीच में 5 है ना, दिस इज 4 times correct, 4 times risk and 1 time risk. So you will end up making 15, balance is 15. So 15, अगर 15% every trade, every 10 trades पे 15% portfolio बढ़ा तो उसको 70 trades you will double the money. Now the only effort is to find out 70 trades which will all be working with at least 1:4 risk to reward ratio. Is it possible? Yes. Has it been done? Yes. See, options में 0.5% से risk ज़्यादा नहीं रहता है, all that is true. But options, because of their extreme leverage, you have to be very cautious where you put your stop loss and where you get out and where you hold. Harneet, maybe you are looking at Nifty futures chart. I am looking at Nifty spot chart. And my line is very thick so that सबको दिखे. आपका लाइन शायद पतला होगा, वो डिफरेंस हो सकता है, because of which not able to figure out. वैसे अगर डेली चार्ट पे जाते हो तो है, डिस्टेंस है अभी भी, और ये अबाउट 56 पॉइंट्स का डिफरेंस है. But for all practical purposes, this has already been met. Sohail Lakhani, those are all irrelevant points. It can extend till Friday, it can extend for the quarter, this quarter, that quarter, it can extend till, वो जैसे कोई और बोल रहा था, थर्ड को गिफ्ट सिटी का ये है, तब तक हाई रखेंगे, ये करेंगे. All those are irrelevant points, because when you are a technical analyst, you have to go by what the chart is saying. You are not going to pay attention to all of this, because the minute you start paying attention to all of those irrelevant points, which are basically satisfying conditions to
only confirm to yourself that what you believe is true. चार्ट बोल रहा है क्या? चार्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सैटरडे तक रुकूंगा, मैं फ्राइडे तक रुकूंगा, मैं थर्ड तक रुकूंगा, ऐसा कुछ नहीं है. चार्ट इज ओनली गोइंग टू टेल यू what is happening on the time frame. Now, has this turned? Maybe it has turned, maybe it has not. This is too small a time frame, this is too small something to compare. What is happening on the 5-minute chart is too small to compare to what is happening on the weekly chart. So the weekly chart, the 5-minute chart doesn't, it is irrelevant. ये इतना प्राइस मूवमेंट आज दिखा रहा है, ये 2 दिन का प्राइस मूवमेंट. गो बैक टू द डेली चार्ट, है कितना? डेली चार्ट में जब भी देखोगे तो है कितना? 2 ही तो बार है, तो कोई बड़ी बात नहीं है. So on such इतना large pattern पे you will definitely be off by a day or two. Yeah, it seems to do it all the time. Whenever there is a major trend change, it seems to gap up on the last day and then suddenly change, or gap down on the last day and suddenly change. But there are times when it has done this also. Like this, though this is not the complete major trend change date, there have been days like this also. There have been days like this also. पहला दिन नीचे आया, next day उसके भी ऊपर खुल के फिर नीचे आया. Now this is the best pattern that you can see. This is the second best, where it gaps up, goes down and comes back. Now this is another one where it gaps down and then goes up. These are the best signals. But these are all on daily charts. No. So now what is happening in the morning? Breakout हुआ, retest हुआ, वापस ऊपर चला गया. So this market is supremely bullish. Now there have been 1, 2, 3 all divergences. समीर पटेल, ये देखो, कुछ बता रहा है आपको? See, okay, the logic that he presented was 19,000 put is at about 300 something. Okay, and 18,000 put was at 20 rupees. So now the point here was 19,000 का एक लॉट खरीदोगे और टारगेट आपका है 16-17,000. तो अगर ये टारगेट है तो 19,000 का खरीदोगे तो कितना पैसा मिलता है एक लॉट में? एक लॉट में आपको रफली अबाउट 19,000 minus 17 you will get about 2,000 rupees. 18,000 खरीदोगे, 20 का है, so 320 into 320 divided by 20, तो 16 लॉट आएंगे. 16 लॉट में आपको 1,000 रुपये मिलेगा. तो सेम ट्रेड अगर आपका टारगेट रीच हुआ तो 320 रुपीज में आपको 16 लाख रुपए मिलता है. सपोज 1 लाख रुपया रिस्क पे रखते हो तो 16 लाख रुपए मिलता है, और इधर एक ही लॉट पे रहे तो 2 लाख रुपए मिलता है. तो विच इज द बेटर ट्रेड if the view is correct? Now all this depends purely on what the view is and it being reached. If it not reached
If it only reaches 18,000, then the 18,000 put becomes very expensive and the 19,001 gives you return. So it's all relative to how confident you are about the pattern and what you are looking at. So that's the logic. In the end, will it fall all the way to 16,000, 17,000 in July? Unlikely, no? But that's a gamble we as analysts who's understood something about the pattern, but we are willing to take. ये pattern ऐसा ही unfold होना है, इतना मैं risk करने तैयार हूँ. So it is the amount of knowledge and what you are willing to risk which will give you that. So the risk here will be purely, even if my entire put goes to zero, it will only be a lakh of rupees. It is not that to earn 16 lakh rupees, I am investing, putting in at risk a lot of money, selling option at 10 rupees, buying at 4 rupees, where also people tend to make a lot of money, but that is extremely, extremely risky. What target am I looking at? My target for this pattern is only 16,700. Possible? Possible. 16,700. ये गिरना चालू हो गया तो आप कोई भी इसको बचा नहीं सकता. This pattern is such. I know the behavior of this pattern once it ends. I have been through it many times in my life. For almost 30 years. 30 साल पहले मालूम नहीं था ये पैटर्न के बारे में. जब से मालूम पड़ा है तब से I am very cautious and this is one of my favorite patterns. जब ये होगा, जब खत्म होगा, इसका जो एंड रिजल्ट है वो ब्रेथ टेकिंग रहता है. Provided you are on the right side of the market. If you are on the wrong side of the market, you are crucified. 16,700. अरे पिछले whoever has this question, AB and all, please go and see past live recordings. I have explained it in detail. Why this one is so important, why I am looking at this. Please do like, share and subscribe. It will help me a lot in taking whatever I am sharing to more people. यार रोज 100 लाइक तो पहुंचा दो. इतना मेहनत कर रहा हूं सुबह से शाम तक, आप लाइक तो दे सकते हो. शेयर करोगे इट विल बी ग्रेट, बट एटलीस्ट लाइक पहुंचा दो भाई प्लीज. It helps me in the metrics so that YouTube also takes it to many more people. Just like you are benefiting, there may be a few more who will benefit. I need your help so that I can share more and more and more. How? ये जो नंबर दिख रहा है 121, इसको पहुंचा दो 500. This is the number of people watching. Is there a correlation between Nifty and USD INR? Yes, there is. Whenever INR goes weaker, Nifty goes higher. And whenever Nifty gets into whenever INR goes stronger, Nifty goes higher. But this entire thing is not working these days. You cannot go purely because there is a whole lot of other things to consider. India's inflation is much higher than US inflation.
India's devaluation of the rupee, which is happening, is much higher than what the US one is doing. So there will be a lot of difference. You will not be able to coordinate it rupee to rupee, dollar to dollar, or and Nifty point to point. It's a broad one. But looking at one, you cannot trade the other. They don't. It doesn't work that way. But there is. ये टॉप है पता नहीं, could be, will it hold here only, doubtful. 980, 970, that level is decent enough. 980.60 अगर है तो ये बहुत जल्द बिफोर द एंड ऑफ द डे इधर आ जाना चाहिए फटाफट. Will that happen today? At the moment, it doesn't look. There is no other option it has. India rupee doesn't have an option. इसका resolution एक ही है. इसका resolution एक ही है. इसका एक, अरे यार क्या कर रहा है? This is the only resolution it has. It has to go up. ये नीचे नहीं आ सकता. 99 cases out of 100, this kind of bullish flags which form, they will only go here. देखो, YouTube live is barely promoted by YouTube algo through video ही wide reach मिलेगी. It's not like that. What happens is there are a lot of people who see, there are some services, ये जो viewer आपको जो दिख रहा है, ये जो व्यूअर्स आपको 111 दिख रहा है, इसको बोल लो तो अगले 15 मिनट में 15,000 पहुंचा दे. It is all a fake one. There are bots available in the market which will take it to 15K right now, and then YouTube will start promoting it. I don't believe in all of that. All my growth, everything is without marketing, without any, it's organic. पसंद आया, you tell other people, नहीं आया, you will not. That is all I believe in. इसको सीधा 15,000 पे लेकर जाके उसके लिए पैसा खर्चा करके, that is not my goal is not to sell you seminars or this one. My goal is only to teach. I do seminars, that's a different issue, but my goal is not to just take your money and drop you just like that and give you some kachra. My point is always to give you things which work, which you can use to make money. And if you will notice, मैं हर बार बोलता हूँ, सीखो भाई सीखो. हर बार सिर्फ ट्रेड लेके कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको कब ट्रेड नहीं लेना है वो मालूम नहीं पड़ता है.
So what happens is, if everyone likes it, then I will be able to reach. It is not possible by me alone. Anyways. जाओ आ जाओ. Ooh la la. Ooh la la. Nice. Nice. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. I think by 12:55 it should pick up speed. Downside. I hope. By 12:55 it should pick up speed. नहीं तो स्पीड आइडियली पिकअप होगा बाय 120. ज्यादा टाइम नहीं है. ज्यादा टाइम नहीं है.
Nice. uh, Good enough, not bad. Okay, image को expand किया. You could have used the artificial intelligence to expand that image, regenerate करवा सकते थे उसको, ताकि ये थोड़ा ज़्यादा expanded नहीं लगा था. बट ठीक है. अच्छा, जो ये सोशल मीडिया आइकॉन्स है ना, उसके नीचे जो बैकग्राउंड दिया, सेम बैकग्राउंड स्टार्ट ईयर के नीचे दे देना. स्टार्ट ईयर के ऊपर नीचे लाइन डाले ना, वजह से डार्क ग्रीन बैकग्राउंड दिया ना, वैसा डार्क ग्रीन बैकग्राउंड उधर भी दे दो. फिर लाइन डालने की जरूरत नहीं है. बराबर. ठीक है. और छोटे में क्या हो रहा है, आ गया समझ में. अब देखो, पहला आपने जो बनाया था और अब में फर्क है. ठीक है. वो विजुअली दिखता है, समवन प्रोफेशनल हैज डन इट. दैट इज हाउ इट शुड लुक. इट शुड नॉट लुक लाइक अ टाइम पास के लिए करके रखा है. अपन इतना मेहनत करते हैं तो थोड़ा. गॉट इट. नाउ व्हेन यू डू इट स्मॉल आल्सो इट लुक्स परफेक्ट. एवरीथिंग नाउ लुक्स परफेक्ट. देयर इज नॉट वन. ठीक है. फिर इसके बाद में फ्री स्टफ वाले पेज पे आ जाते हैं. फ्री स्टफ है, कोर्सेस है, इंडिकेटर्स, ब्लॉग, अबाउट, कॉन्टैक्ट. ओके, डन. वेरी गुड. ठीक है. वी विल डू दिस ऑन द वीकेंड. ओके, ये तो ख़त्म करो, फिर बोलता हूँ नेक्स्ट. हाँ, अभी 2 मिनट में ही हो जाएगा. ठीक है. फिर शाम को बात करते हैं. टेक अ ब्रेक टुडे. ठीक है. 3:30-4 बजे तक मैं बिजी हूँ, उसके बाद में बात करते हैं. ओके, चलो. How much effort does it take? I don't know how much effort does it take to press that thumb button, but if there are 110 people, it should have been 110 likes. But anyway, I am looking at it, but will it happen 12:50? Yeah, 12:50. Let's see. It is still going up. We are at the fag end of this, as I said before. At the fag end of this entire moment from 16,800. Can it be here? 1, 2, 3, 4, 5. हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? कहीं ना कहीं आके होगा तो ऐसा ही कुछ. हो सकता है क्या? देखते हैं. ऐसा ऐसा हो सकता है क्या? देखते हैं. ऐसा हो सकता है क्या? देखते हैं.
What is the music I am playing? I don't know. YouTube gave it to me, so I am using it. We cannot use any music we want on YouTube. It has because copyright problems are there. So ideally, I would like to play some nice Hindi music, which way back, बहुत जमाना पहले, 2013, actually exactly 10 years back, I used to run a live trading room, real-time live trading room in Rajkot. I stayed in Rajkot for about 6-8 months, 9, maybe about 8-10 months in 2013. That time I used to run a real live trading room. So we used to have big speakers and only we used to play Kishore Kumar all through the day and we used to trade the markets. It used to be more or less the same, trading the markets. कहीं कुछ अलर्ट आता था, कुछ ये होता था, फिर then we used to enjoy the music. बीच में जब भी ऐसा जब भी larger pattern trend change हो रहा है या बीच में market is caught in a dull, everybody just used to there used to be a whole lot of chit chat. It used to be a lot of fun. हिंदी वाला ही अच्छा है लेकिन उसका कॉपीराइट का पैसा देना पड़ेगा और वो कॉपीराइट यूट्यूब अलाउड नहीं करता है अनलेस आई गेट कॉपीराइट फिर गेटिंग कॉपीराइट फ्रॉम एनीवन हियर वुड बी सो डिफिकल्ट देखते हैं ट्राई करते हैं now that you have said Hindi music peppy music will make you take a trade प्रॉब्लम क्या है ज़्यादा पेपी म्यूजिक हो गया तो कुछ ज़्यादा ही ट्रेड कर दो तो फिर वो क्या बोलते हैं बाउंसर वाला वेब सेमिनार नहीं हो जाएगा विथ म्यूजिक एंड डांसिंग एंड एवरीथिंग देखा था ना वीडियो किसी का समन नो आई एम नॉट फ्रॉम गुजरात आई एम ए साउथ इंडियन I have many friends from Gujarat. I guess more than 70% of my friends are all Gujaratis or Kachchi. That doesn't make a difference. Naseeb, destiny pulled me to Gujarat in 2013. हिंदी वाला ही अच्छा है क्या अच्छा है मार्केट नीचे आए तो मजा है फिलहाल तो सबकी गाली सुन रहे हैं हम मजा आ रहा है करने दो भाई साहब डांस करने दो All my students are my friends. Ask any of them. There are a few here. I don't treat anyone as a student. We are all learning together.
Why can't it consolidate instead of a straight? शौनक मराठे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. चलो इसका आंसर देते हैं. मार्केट को करने दो जो कर रहा है मार्केट को, अपन कुछ और देखते हैं. चलो, मजेदार एजुकेशन. आपको एक कुछ और इंटरेस्टिंग समझ में आएगा इससे. लेट्स गो टू डेली चार्ट. जरा खाली स्पेस पकड़े. शौनक मराठे, 23 July 18500 put, it is only 3250. क्या मालूम, छोड़ो ना. अभी अपन एजुकेशन पे आते हैं थोड़ा. नाउ व्हाट हैपेंस इज, सी अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. आपने सुना होगा अबाउट पाइथागोरस थ्योरम. सुना है? नाउ मार्केट में भी पाइथागोरस थ्योरम चलता है. इसको अपन करते हैं इस तरफ, क्योंकि मार्केट का पाइथागोरस थ्योरम ऐसा चलता है. ये है अपना टाइम. ये है अपना प्राइस. है समझ में यहां तक? दिस इज प्राइस एंड दिस इज टाइम. बट जो चार्ट अनफोल्ड होता है उसके अंदर टाइम भी होता है और प्राइस भी होता है. ठीक है, इसीलिए मार्केट के इसको बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल टाइम प्राइस. इसमें टाइम और प्राइस दोनों आ गए. ओके. अब पाइथागोरस थ्योरम में अपने को ये मालूम है, अगर ये ए है और अगर ये बी है, ये बी है, और अगर ये सी है, मार्केट में कोई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते, ये सोचा नहीं सोच समझते. तो अपने पास अगर ए स्क्वायर, ये पता है ना, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये पता है ना पाइथागोरस थ्योरम का. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. नाउ होता क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन कठिन है, बट होता क्या है, मार्केट में भी ये जो प्राइस टाइम है ये कभी भी इक्वल रहता है, मतलब सेम रहता है. ये जो सी टाइम प्राइस है वो सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता. I had to go for a second. Now, अगर ये कांस्टेंट है, ओके, टाइम प्राइस कांस्टेंट है, तो टाइम कम होता है.
Yes, price time vector is constant for all the moves. Or in the same degree, it is always constant. That's one thing a lot of people have difficulty in understanding. Looks like people are lost. So now the question is, if time reduces, what will happen to price? If price increases, time reduces. If time increases, price reduces. तो अगर टाइम रिड्यूस हुआ तो ये ट्रायंगल क्या होगा? ऐसे होता है. और अगर टाइम बढ़ता है तो ये ट्रायंगल क्या होगा? अरे यार, ऐसे होता है. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई जब ये मार्केट जब ये ब्रेकआउट लेता है तो फास्ट क्यों मूव होता है? एग्जैक्टली अब समझ में आया. जब ब्रेकआउट लेता है तो फास्ट मूव क्यों लेता है, और टाइम करेक्शन करता है तो साइडवेज मूवमेंट क्यों करता है? क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली ये जो टाइम प्राइस का रेशियो है उसको बैलेंस कर रहा है. इट इज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड मेथड, बट अगर ये प्राइस टाइम कर रहे हो तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट प्लस और माइनस 1 पॉइंट हाई और लो दोनों मिलते हैं. नॉट ओनली हाई और लो मिलता है, आपको टाइम भी मिलता है, कौन से टाइम में कितना होना चाहिए और कहाँ पहुंचेगा. इतना सब करने के लिए बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए मैं नहीं करता हूँ. आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड यार. इतना मेहनत करके कौन निकालेगा? कोई मतलब नहीं है. मोटा मोटी करके चलो, फिर भी ट्रेड्स आर perfect. So this is what actually happens. Now, because the market is unfolding,
अगर आपका स्केलिंग परफेक्ट है तो मार्केट इज ऑलवेज अनफोल्डिंग an equilateral triangle. That is another concept. Market is always unfolding what is called an equilateral triangle. ये चार्ट पे दिखाना बेटर रहेगा. थोड़ा मुश्किल है समझाना, बट no, I am not going to apply it to the current level. I am not giving you all those secrets on what is the percentage, what is the level, what is the exact one on live trading. No, this is advanced, highest levels of GAN. So I am not going to give it in detail. I'm just giving you the concept. बाकी अगर आप, if you can work it out yourself. So now another thing is, market is always doing a triangle like this all the time. It's a very tricky concept to apply and get in. Not everyone will be able to make this. This is a triangle in a very weird form. इसको येलो कर दो तो दिखेगा, या रेड करो दिखेगा. रेड करके 4 पॉइंट क्यों नहीं दिख रहा है? ओपेसिटी 0 है ना, फिर क्यों नहीं दिख रहा है? Opacity 0. So there is a triangle here, there is a triangle here, there's a triangle here, there's a triangle here, there's a triangle here. So all these there are many triangles here going on. There is, if you notice, there's a triangle here, there is one triangle here. So all these triangles are there. So depending on the angle of the triangle, the next price move will come. अब कौन है? What time frames do we have? There is no max upside limit. Max upside limit is infinity. So now question is, vertical क्यों आना चाहिए?
वर्टिकल इसलिए आता है क्योंकि ये जो पैटर्न बना है इसका ट्रायंगल का एक साइड है इधर, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने के लिए, ठीक है, ये साइड क्या होगा, ये देख रहे हो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां बन चुका है, ये यहां बनना बाकी है। इसका आपको स्केलिंग चाहिए, परफेक्ट स्केलिंग, परफेक्ट मिला तो समझ में आएगा ये कहाँ एग्जैक्टली, ये कहाँ पे जाके ये बनाता है। When you have the perfect scaling, you will get a perfect equilateral triangle. Same thing you can see many times. It's not that this is the first time, it has happened many times before. It's happened here also. If you know exactly where to begin, where to end, that is the time you will actually see the reality. बीच में कहीं भी उठा के डालोगे ये चलना चाहिए, वो नहीं चलता है. There is no Fibonacci. Fibonacci does not work as you think it will work. I don't believe in Fibonacci. I don't believe in that there are so many different retracements. 50%, 61.8, 73.6, 38.2. There so many different ones are simply not there. Now, should I curse him or should I not curse him, or should I just let him go for getting me worked up? Stupid guy. Chalo, chodo. I looked like a fool. क्यों सुना? Why did you listen to him? My mistake. मिस्टेक कर लिया, अब क्या कर सकते हैं? कभी कभी गुड एडवाइस देता है, कभी कभी जल्दी करता है. Just give me a minute, please. 120 today.
दिया, 19,000 लग गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बल्ले 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 बल्ले। गले मिलो गले मिलो गले मिलो गले मिलो गले मिलो गले मिलो। केक लाओ केक लाओ केक लाओ। अरे मेरे को भी केक लाओ, केक खाना है, केक 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 खाना है, केक खाना है, केक खाना है। अरे केक खाना है। 19,000 लगा दिया, 19,000 लगा दिया। वेरी गुड। 1:20 PM का टाइम दिया था, वहीं पे लगाया। क्या बात है, लगा दिया। यही है क्या टारगेट? 19,000 लगा दिया। ब्रेकआउट कर दिया कर दिया कर दिया। क्या मालूम दुल्हन भाग गई कि दुल्हन लग गया 19,000। मजे 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 मजे। चलो 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 चलो। अब 19 लगा दिया तो आगे दूसरा कुछ काम करे। टी शर्ट भी है। टी... वेज तो है, वेज तो है। वेज तोड़ेगा क्या, नहीं तोड़ेगा? देखते हैं वेज तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। मेरा वेज मेरा वेज मेरा वेज मेरा वेज तोड़ेगा, तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? वेज तोड़ दिया तो गया खत्म, मजे। लेट्स सी। 19,000 लगा दिया, 19,000 लगा दिया। कोई तो कुछ चिल्ला रहा है। बावन बावन है भाविन भाई। आई होप यू नो व्हाट इज बावन।
बटाला वाला. हाँ जानता हूँ. What about him? That's your opinion. I will not comment about others.
What happened to Reliance? क्या हुआ? What happened to Reliance? What I feel about Nifty should reproduce in all the charts. I am only looking at. I will not look at each of the charts individually because some of them may perform very differently from what Nifty does. एग्जैक्ट 120 पे टॉप लगाया तुम, क्यों लगाया? ना क्या है? ना क्या है भाई? दोनों 120 पे टॉप लगाए. Very good. Then now what next? Forty-four 360 on 44 400 on Bank Nifty. What are you doing? You have also done, completed. Why are you not coming down? Suppose this is an ABC flat. Suppose, for example, you are here, again overlap. Then, if you are this case, then you are again in an overlap. Then what? Then what? What the hell? What the hell? No, you are not all this. You are something else. Now what? Why these overlaps here? Okay, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5. When are you going to turn? There is not much left. When are you going to turn? What is the problem here? कर क्या रहा है? Why so much confusion? Can't just be bullish like this at this point.
केक कट गए. गैप भी आ गया. Last in a series of gaps. Yes, you're last in a series of gaps. On the weekly also, do we have a gap? No, on the weeklies we don't have gaps. Do we have gaps here? No, we don't have gaps anywhere. It's only turn. On the daily also here. अब बचा क्या है तेरे पास? हेलो.
क्या चल रहा है? Yeah, I'm seeing that, Bhavin bhai. Even on the daily chart, it is doing an extreme high. So let the market close, then we will see. बार क्लोज हो जाने दो तो 100 दिखेगा कि देखो. Honest answer, I am looking for something which will tell me what this bloody pattern is. I know it is very simple. This is an impulse, but within that is not very clear. I am not being able to label it according to the patterns which we need to find. So there's some mistake I'm making. What is a mistake I'm unable to figure out. But does that rule out the larger trend? No, larger pattern? No. That larger pattern has happened on extreme large. It's an extremely large pattern. So it doesn't change with this 1 minute, 5 minute, 10 minute, 15 minute, 1 hour charts. So where exactly is it going is still being a little difficult to figure out. The minute I figure out, I will share with everyone here. What am I looking at? I don't know. तो इसीलिए देख रहा हूँ ये तो क्या कर रहा है. ये 1 2 3 4 करेक्ट है. ये 4 में द लास्ट 1 2 3 4 5 looks correct, but within this I am not able to figure out. Only here. यहाँ तक तो ठीक लग रहा है. So 1 2 3 4 5 तो कहाँ है क्या है. तो जहाँ भी ये लास्ट 5 खत्म होना चाहिए उसके बाद में लुढ़कना चाहिए. That is what I am looking at. Why यहीं पे around this area only is because we have on the long term we have reached the target. तो जहाँ भी होगा, wherever this is, unfortunately I'm not able to get the point where it will do. So somewhere it will do. When it is done, when it is going to change the pattern, everything will become so crystal clear. So उसके बाद में एक ही टॉप बचेगा जो which you have to pay attention to. And as soon as I get it, I'm continuously thinking ये क्या 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 कर सकता है. So the minute it does, see, because within this also, what am I looking at? Why am I paying so much attention and being silent today? So, let me go to a 1 minute chart. Then so which is this level? This level is 18952. 1 minute. बड़ा करो. 18952. यहाँ से देख रहा हो. तो somewhere wherever this impulse ends, that should be the end of the story. Last point तक आ गए. So, जहाँ पे end of the story लगता है वहां से
स्ट्रेट लाइन डिक्लाइन आना चाहिए, even in this time frame, 1 minute also. So which is what is continuously making me think. So if this is a 1, this is the 2, then this is 1 2 1 2 3 4 5 4 5 whatever. So yahan, can this be a 3? That is my question. So agar ye 3 hai to ye 3 थोड़ा डाइसी लग रहा है, बट दिस कैन बी अ 1 2 3 4 5. तो फिर ये 4 आ सकता है, 4 होगा तो ये 5 of 3 है, तो ये 4 होना चाहिए, तो ये 5 होना चाहिए. दिस इज ऑल थॉट्स विच आर रनिंग इन माई हेड कंटिन्यूसली. कौन सा किधर बैठने वाला है. So if this could be 1 2 3 4 5 1 2, that will fit in. So this is 1 2 1 2 3 4 5. So यही तो सोच चालू है. 1 2 3 4 5 और 3 4 5 3 4 5 ऐसा हो सकता है. So if this is the case, then this will be 1 2 3 4 5. So तो एक बचा है कि नहीं. Those are all the thoughts running in my head. Now these are all being colored the same, so you may end up getting confused. This is one color. That is 1 2 3 4 5. This is another one. This, let us color it purple. ये 1 2 3 4 5 में ये 1 2 3 4 5 हुआ, तो ये 1 2 3 4 5 हुआ. ये खत्म अगर हुआ 3 4, ये 1 2 इधर 3 4 5 खत्म हुआ, ठीक है नहीं. ये अगर खत्म हुआ तो अब फटाफट आ जाना चाहिए नीचे. शुड कम टू टेस्ट ऑलमोस्ट हियर. विल इट कम इज द क्वेश्चन which is running in my head continuously. 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ये बराबर है, ये 1 ये 4 में ओवरलैप नहीं हुआ, तो ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये 4 तोड़ देना चाहिए. The minute it breaks this level, it has to come here. The minute it breaks this, तोड़ा. The minute it breaks this level, it has to come here. The minute it breaks this level, it has to come here. So this is what, and it has to come very fast. अगर ये very fast है तो ये क्यों किया. अगर ये क्यों किया है तो 1 2 होना चाहिए. So all those continuously thoughts running in my head, which is a little confusing at the moment. So now once this gate level gets broken, that is when the larger pattern will kick in. So we'll have to go one step at a time. ये लेवल ब्रेक किया, नेक्स्ट ये लेवल क्विकली ब्रेक करना चाहिए 985. Then in this case this becomes 1 2 and 3 starts. Depends. So if this is the case, this should become 1 2 and then 3 starts. See, this is the way it had to move, fast and quick. So let's see where it will move. I hope you are getting what I am doing here, if you understand Elliot. So now this level has to break fast. Yeah, you can take resistance here, should not go really much higher. Now within this 1 2 1 2, ये 3 है अगर है तो 1 2 3 4, come on, fast. Okay, that is the entire thought. What back? The minute this is over, it will leave no doubt to you as it is over, and before the end of the day, you can even see this entire 350, 150, 200 points which we gained today being given up. That's a kind of move you expect at the beginning. Quick, fast move to the opposite side.
which is what I'm ready to. Once it breaks this level, should be again faster. From here, the minute it broke, it came all the way till here. So the minute this breaks, it should go down. From here, go down, it should not hold anywhere here. The real target is only here, 955. Once 955 breaks, it should still go further down. यहाँ पे क्यों होल्ड कर रहा है? क्यों होल्ड कर रहा है? That's the last holding level you have. So you have taken the last. Okay, if I pull this here as the one. No, this is perfect here. So 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. अरे यार 1 minute में है तुम. 5 minute कर लो. ये तोड़ने के बाद यही तो है लेवल तोड़ने के लिए. अब ले आओ. ले आओ.
इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? इतना करने के बाद टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? किसके लिए रुकना है? लो निकालो इसको। एग्जैक्टली यही पॉइंट आके 4 ही आके बीच के भाग रहा है, क्यों? इसको निकालो, 950 तो आ ही जाएगा। हम्म। मार्केट जहां से मैंने एक इंटरेस्टिंग पार्ट, मैंने 20 रुपए में वो पुट जो लिया था पहले वाला, 20 रुपए में एक ऑर्डर भी रखा हुआ है, ठीक है ना? मार्केट ऊपर आया लेकिन वो 20 रुपए वाला ट्रेड नहीं हुआ अभी तक। इंटरेस्टिंग है। 20 रुपए का एक ही लॉट लगाया, वो एक लॉट भी देने तैयार नहीं है 20 रुपीज में। तो कैसे 19,000 का मान लू?
ये सब एक्सप्लेनेशन है जिसका कोई मतलब नहीं है. विक्स इज राइजिंग, दैट्स वाई सर दैट इज राइजिंग. व्हाई इज विक्स राइजिंग? Point is very simple. Chart is not telling you. So from here I put one order at 20 rupees. So even then, if Nifty has gone up from here to here, it has not. So the price movement here is quite nice. Let me see. Once this breaks, this should be done very fast. A second, please. That is good. Break. Chalo.
चलो आ जाओ. Now with Nifty moving as expected, expect by 2:30 p.m. for 953. I hope 2 बजे तक 953 लगाएगा क्या? हाँ ये 4 तोड़ते ही quickly it has to go to this level of 956. It has to be should do it fast. पता भी नहीं चलना चाहिए कब बना दिया 956. 4 तोड़ते ही देख this 3-4 बार में बना देगा. Once 956 is posted, the next level to break would be 952. 56 और 52 में ज़्यादा फर्क नहीं है. 56 और 52 तोड़ते straight it will go to this 912. वो लग रहा है नहीं लग रहा है is all secondary. 9016 पे लगा था ना, 892 आएगा. पैटर्न है, जब भी खत्म होता है तो फास्ट मूवमेंट आता है. Will it go up? Will it go down? All those doubts हटा देना चाहिए. फिलहाल तो ये काउंट बराबर लग रहा है, बिकॉज ऑफ विच वी गॉट दिस. अब ये कंटिन्यूअसली करना बहुत स्ट्रेसफुल होता है, इसीलिए नहीं करते. लेट्स सी. Why stuck at this too? For what reason? Should not be stuck. Why are you stuck here? Unless you are making 1 2 1 2 1 2. अरे इतने 1 2 1 2 क्यों? 3 बड़ा देने वाला है. आ जाओ नीचे. ब्रेक. सर 18900 पे ये रुकने वाला नहीं है. जब गिरना चालू होगा तो रुकने वाला नहीं है. डोंट हैव
I don't have any doubt at all that once this trend change comes in, which should come in this area only, जैसे ये एरिया में ट्रेंड चेंज आएगा, बड़ा ट्रेंड, वो सीधा 16,800 का ही टारगेट चलेगा. उसके बाद में दूसरा कोई टारगेट नहीं चलेगा. It may take time to reach there, but it will going to be a fast decline. मेरे को कोई डाउट नहीं है. Whatever trades I'm taking publicly, सबके सामने ले कर रहा हूँ. There is nothing hidden here. Absolutely. Have I held the view? Yes. Have I made a mistake? Yes. What mistake I made, I will reveal once this market comes down. Then you'll understand. In the stress of the market, stress of live trading, बहुत गलतियां भी होते हैं. Even after so many years, गलतियां होती है. But if you have a plan and if you are working towards that plan, then those mistakes will get covered. वो इतना मायने नहीं रखता. अभी तो 2:21 हुआ, बहुत टाइम है. Depends on your experience, Bhavesh bhai, Bhavin bhai. It depends on your experience and how quickly you are able to adapt to the changing scenarios. What happened in the last 3 days, I have to actually present it to the next Elliott Wave batch as a case study. How even after the best analysis, you tend to get carried away. Now, since morning when it started, I've been watching this. ये 1, 2, 3, 4 ही हो सकता है. ये 5 कितना बनाएगा and कहाँ तक बनाएगा? This was continuously my question. Only one thing which I had in mind was 3 was larger than 1. I mean 3 was larger than 1. So इसका कोई limit ही नहीं होता है 5 का. तो that was another thing. So will it end at 3? Will it end? Now the question still remains. Has it ended here? Has it really ended here? Or are we still doing something else? That question still remains. It will get cleared very soon. What is going on with volume? Volume. आज हाई वॉल्यूम आ गया. हाँ, वेरी गुड. लास्ट 3 days हाई वॉल्यूम आ गया. वेरी नाइस. Last 3 days the highest volume has been reached. Very good. Now यहाँ देखो, ये इधर हाईएस्ट वॉल्यूम होना चाहिए.
So now again, what are you doing? Question always keeps coming. What are you doing? You got stuck at this level. Why? This doesn't look an impulse. I can easily transform into one because we are already down into a 1 minute chart. So there will always be a confusion. So this is where your spike had come. This is where your spike had come. Spike in volume, I mean. अभी तक 20 रुपए वाला ट्रेड नहीं दिया. इतना क्यों? इसको खत्म करने दो, फिर देखते क्या बनाएगा, क्या देखेगा, क्या बोलेगा. The 1 minute chart. So many things are possible here. Ooh la la. How's this possible? Here, you can't do this. Let's see. Action should start again at 1:30. 2:30, sorry. $229, एक ही मिनट बचा हुआ है. 2:30 should start again. चलो.
228, 230. Yeah, good. Chalo. चलो चलो चलो. अब ये जो चला, अगर मैं सही हूं तो it should continue till 325 or yeah, should continue till 315, 325. Downswing should continue. Let's see if this will happen. अरे कौन सा fear started, कौन सा VIX rising? The market is at all-time high. Where you started, fear started. Fear don't start like this. This is not fear. ऐसा fear कहाँ चालू होता है भाई? It is not fear. On the contrary, it is extreme bullishness which is there. Without bullishness, ये वहां यहां तक आ गया क्या 19,000 तक? What is actually happening is, ever since it hit 19,000, the price movement has been going up and down a lot. बार्स का साइज देखते जाओ, यहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या हो गया. So there's extreme action going on here. Could be because of expiry, could be because of the fight between the bull and the bear. So that is actually causing the volatility. Volatility is how fast it goes up and down.
कंफ्यूजन खड़ा किया इधर. Oh, classic. Come on. क्यों परेशान कर रहा है? करना जो करना है. कितना बुलिश हो सकता है लोग? You can't be. It should collapse under its own weight here. See, once the market starts coming down, the bulls will also come into the bears bandwagon. Because उनके पास जो position है वो बेचना पड़ेगा to book the profits. When that starts, the high actually starts like that. When the last bull has bought and somebody wants to sell to exit out of their positions. And once one exits, एक दो करके चालू धीरे धीरे होता है, फिर फास्ट होता है. So this is just ideally this should be the 19,010 whatever this level 19,011.25. Once this breaks now, lot of people who have looked at, who are sitting on profits will come to sell, and that should take the market down. $230 बोला था, 225 230 को चालू हुआ. That is fitting fine. Ideally यहां से लेके 3:10 तक सेलिंग आना चाहिए. देखते हैं क्या आएगा. जैसे ये पैटर्न अनफोल्ड होगा, by 3:30 today, entire thing will be clear. I should be able to give you a forecast for the next 1 week. How we will look at the market. That should more or less create the map for the next 1 week.
देन नेक्स्ट वीक कैसे अनफोल्ड होगा वो देख के नेक्स्ट 1 मंथ 2 मंथ्स का कैसे मूव होगा वो मैप बन जाएगा. शो यू धीरे धीरे. यू हैव बीन फॉलोइंग व्हाई आई वाज वेटिंग. मॉर्निंग से आई एक्सप्लेन्ड ऑल दिस. स्टार्टेड द काउंट हियर. एडजस्ट करके किया काउंट बीच में. यहाँ तक तो आया. अब देखते हैं क्या क्या होगा. जैसे जैसे होगा जो जो बोला है वो हुआ है कि नहीं देखना है. आई फील वो 19,000 वाला टी शर्ट अभी अंदर रख देना चाहिए इस्त्री करके. 2 साल नहीं आना चाहिए. इस्त्री करके रखो फिर देखते हैं. भाविन भाई 100 पे रह गया. परसेंटेज डी. परसेंटेज के क्या हो गया. That's why I said wait till the market closes. क्यों. शायद let me show you that chart. ये कुछ समझ में आया. भाविन समीर others who were there in the stochastic ये कुछ समझ में आया. What about back Nifty? नया हाई लगाया क्या आज. बैंक निफ्टी लगाया. नया हाई लगाया तो खत्म समझो. जब निफ्टी खत्म समझ रहे तो बैंक निफ्टी क्यों नहीं समझे. Tomorrow is a holiday. I will study the charts in depth again and I will come back with detailed analysis tomorrow or day after tomorrow.
इनसाइड बार मत बनाओ यार, बनाना हो तो ऊपर वाला बार बनाओ या नीचे वाला बार बनाओ, ये इनसाइड बार क्यों बनाते हो? हर्ष शर्मा, सिर्फ थर्ड डाइवर्जेंसी देखोगे, कुछ और भी देखोगे? फोर्टीन 48, कमान, इनसाइड बार मत बनाओ। इनसाइड बार में हमारे को मजा नहीं आता है। पुट क्या हो गया? देख, नहीं दिया पुट, अभी भी नहीं दिया। Alert on Conquer. इनसाइड बार ही बनाया, क्या नाटक है। चलो चलो, इलॉजिकल के बाद में एक्सट्रीम लगा के वार्निंग बना के सब हो गया। मेनी पीपल विल हियर, ये क्या इलॉजिकल के बाद में वार्निंग बना के सब हो गया। भाविन, हर्ष, समीर, you know what is happening. Illogical, three divergences, illogical signal, last swing up after that, warning, everything in place. There's only one direction the market can take here. The only thing that we need is the bar on day after tomorrow. That's all that is needed to confirm. That's on a daily chart. If you go to the 1 hour chart, 1 hour chart पे देखो क्या बनाया। By end of this hour, signal and trigger should be in place. Expanding diagonal, ऐसा कोई, there is no such thing as an expanding diagonal. Whoever taught you about to say expanding diagonal has taught you wrong.
I'm sorry, but there is no such thing as an expanding diagonal. Okay, now this is classic real life example. Daily pay, illogical signal. Daily pay signal about to happen. Hourly pay signal about to happen. Go to 5-minute chart. What is it? Do you have illogical signals? Do we have the signal? Hourly 1A or 1B possible? Yes, correct. 1A or 1B possible. So 1A or 1B is telling you what? Expanding ending diagonal is a myth. It does not happen. So don't put your money on expanding ending diagonal. There is no such thing as an expanding ending diagonal. Still doing an inside bar. Practice, practice, practice. That's the only thing we can do. I have been using stochastics for 35 years. You are using for 1 month. June 4th, though, we had the webinar. It's only been 24 days. So obviously, I will see all these things at the same time. You also just need practice. और कुछ नहीं चाहिए. जितना practice होगा उतना clarity मिलेगा. ये देखो 5 मिनट पे 2 इनसाइड बार्स करके वापस नीचे. क्या कर रहा है? जाओ ना एक ही बार. हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर. हाँ जी. What not given up? Market has given up. Market has given up. खत्म हो गया. That is what I meant to say. That 19. नहीं नहीं, मैं गिवन अप कैसे करूंगा सर? इतना आई बीन राइट ऑन द लास्ट so many months now. It has given up. It's gone. Should close below 950. Hello? 18,950 today. That is what I'm hoping and looking for. Even otherwise, Friday को दे देगा. It's not much. हाँ दे देगा. That's my view at the moment. But sir, quarter ending होता तो I don't know. I don't subscribe to all those. I'm looking purely by the chart. The chart is saying I have given up. Because there's no reason why it should have come down at this level here. There is no reason why it should have come down at this level, sir. Hello?
True, 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 true. But करेक्ट 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 करेक्ट. एक बार के लिए 19,000 लगाया. ट्रू ट्रू. हाँ सर, दोनों कर गया. यस. I feel this is the top. By evening, let the market close today. I will study the charts again overnight and tomorrow. Tomorrow is a holiday. I'll study the charts and I'll come back to you by tomorrow afternoon. Let's talk tomorrow afternoon. तीन इनसाइड बार क्या कर रहा है? Oh. Who's buying at 892? 970, 980. आने दो बॉस, 20 पे देकर जाए अपने को, मजे आएंगे. आ जाओ बोलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. 2135 आ जाओ आ जाओ. 20 में एंट्री तो डाल रखा है. मैं इसके बाद मैं 18 पे भी डालूंगा. हजार रुपए तो लगाना है ना एक एक लॉट में. देते हैं 10-15 लॉट लेके बैठते हैं. ₹20 में ले लेके कितना ले लेगा? आइला, ये क्या है? 3 इनसाइड बार बाद में एंगल्फिंग बेर. सैंडविच. भूख लग रहा है, सैंडविच ही खिला दो. वैसे मैंने भी उठाया समीर भाई, कुछ तो मैंने भी उठाया. अब इसके बाद में एक्स्ट्रा जो चाहिए ना वो सस्ते में चाहिए ना, क्योंकि मार्केट ऊपर गया था तो सस्ते में लेने की कोशिश कर रहा था, नहीं मिला. कि 310, 315 तक, 325 तक गिरते ही रहना चाहिए. दे दिया. 57 दे दे. 957. Give up 957. Give up 957. That's the way. That's the way. That is, yes, that's the beginning of the, that's the way. That's the way. Come on, come on, come on. That's a way to give up with long bars.
We're talking about 18,000 July options. Come on, give up 957. Once this level breaks 953, the next target which opens for all the intraday people is straight here. ये बीच वाले कोई रुकने वाले नहीं है, सीधा इधर ही 18878. Break 950. Come on. Come on, break 950. Come on. अब बोलो, जब इधर था, लगा था जब ये चालू हुआ कि इधर आ सकता है, तो 50 पॉइंट गिरेगा. आज सेटलमेंट है, क्वार्टरली सेटलमेंट तक रुकेगा. द चार्ट इज ऑलवेज टेलिंग यू व्हाट इट इज डूइंग. आ जाओ, अब हो गया, खत्म. दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. अवरली क्या बोल रहा है? हाँ, ब्रोकन 2, नो? यस. Ash Nifty. Quickly see a retreat on Nifty towards पहला लेवल क्या मारे? 18,600.
कर लो खुश रहो खुश रहो और एक सेलिंग आएगा और एक राउंड आएगा और एक राउंड आएगा बाईस दाल केक ले ले क्या बीस वाला दे जाएगा बीस वाला दे जाना आई एम मोर देन हैप्पी टू बाई I am very, very happy to buy. बीस वाला नहीं दे रहा है कर लो वैसे भी एवरेज क्लोजिंग आएगा 18990 995 कोई टेंशन नहीं the way it has given up from here is quite comforting the way the point that it has broken this and closed below that level for once is enough more than enough because of expiry that volatility will be there and I will not be surprised day after tomorrow if we open on the downside with a gap because that will be 3 of a smaller one, so I will not be surprised. Let's see, tomorrow being a holiday, there's 2 days of action to happen on the S&P 500. The S&P 500, this is the chart. So S&P 500 has been quite interesting. So this entire pattern should give up. So where is S&P 500? S&P 500 daily chart. Auto.
So there's really nothing here to worry about. This kind of actions happen on some individual days. This very fact that today it should give up. If not today, tomorrow evening. Because this is classic. So this pattern is complete here. So this is a WXY, or it could be. So just waiting for the S&P 500. This one. Can you carry short? That is your call, sir. I cannot tell you. But I am buying puts. So it's whatever you want to do is entirely your choice. I'm not advising anyone here. Standard disclaimer, nothing shared here is to be treated as trading advice. It's purely educational, and I hope to give more education than only short trades. Island reversal, is this possible? Not really. That will not be an island. Just because you have a gap doesn't mean it will be, because see this is really not a complete island here. I'm sure a lot of people will call for an island reversal here. The island नहीं है. Island होता तो ये main body से completely अलग होता. Truly speaking, there has never been such clear island reversals anywhere. At least ये island है. ये island है. I hope it is clear now. It is away from the main body. After that, it gave in for a few days. This is the island reversal. This is not by it. Even if it opens with a gap down, does not make it an island reversal. Even if it is open below this level, it does not make it an island reversal. Anyway, this count has worked perfectly. Now let's see how this count works. Too early to count here. Let the market do what it wants to do, because there are a few wrinkles here that need to be counted. Will this be an ending diagonal kind of, even leading diagonal kind of pattern? So is this a leading diagonal? That needs to be counted. Understood. So if you take this one here, from here, if I take this can be a 1. I'm really not very happy with how this unfolded here. So it's more like a 1 2 1 2 or a 1 2 ABC expanded flat. We'll have to look at it in detail inside and then decide. Last 10 minutes क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे. Because the average price, they would want to maintain it near 9,000 for the last half an hour. 19,000. 20 पे आ गया. अरे वाह, आ गया. चलो. अरे तो और लगाएंगे ना. और कितना पे लगाएंगे? बाय 18 पे लगाएंगे ना. 18.1 लगेगा. लग गया. अठारह पे दे गया तो और एक ले लेंगे. उसमें क्या है?
I can't speak Hyderabadi Hindi now. Only if I land in Hyderabad, probably. ఎందుకన్నా శ్రీధర్ ఆకుల హైదరాబాదీ హిందీ తెలుగులో మాట్లాడొచ్చు కదా. Ooh, entire range it is doing excessively high volumes. Yes, 1000p July I am buying. $18,000p. Wow. Wow, chalo. Very good. Very good, very good, very good. More than happy. चलो और ट्रॉलर आ गए. ट्रॉलर नहीं है अभी तक. अच्छा सब all of them are stuck in the expiry probably. What is 42 plus 10? Ooh la la, ooh la la. Ooh la la, ooh la la. 1, 2, 3, 4, 5. Bounce to 2, A, B, C. Will you give up now again? Let's see. It is the same level, 986 again. It should close around 986 today. चलो 3:20 हो गया, 3:22 हो गया. खत्म करते हैं अभी. भूख लगा है. What if it gaps up? Then I will sell more. ऐसे सब hypothetical questions क्यों पूछते हो? गैप अप हो गया तो स्टॉप लॉस लगेगा. उस पर डाउट क्या है? क्यों इतना सोचना? जब लगाएगा तभी आएंगे. हमारे लिए पैटर्न खत्म है. पैटर्न क्यों खत्म है? सुबह से एक्सप्लेन कर करके थक गया. ये पैटर्न इसलिए खत्म है. पैटर्न इसलिए खत्म है. ये इधर आके टच करके आया. That is more than enough. It's only of academic interest. डाउट ना सब्जेक्ट के बारे में पूछो.
very interesting to explain. It will be very nice to explain. Don't ask about exactly market क्या ये करेगा तो क्या वो करेगा तो क्या. तो होने दो ना. तो फेक ब्रेकआउट किया तो क्या करेंगे? बेचेंगे ऊपर, और क्या करेंगे? तो ऐसे गैप डाउन वाला सवाल पूछेगा तो क्या जवाब दे? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है. Even my telling that it will break down is because of the pattern. That is also hypothetical. घनश्याम भाई, मैं आई डोंट रिमेम्बर मैं क्या क्या बोलता रहता हूँ. मैं बोलता हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है. और जो शेयर करता हूँ, मुझे पता नहीं है कौन से टाइम पे क्या बोला, क्या बुक शेयर किया, क्या नाम बताया. कुछ भी याद नहीं रहता है. नॉर एम आई इंटरेस्टेड इन रिमेम्बरिंग, बिकॉज एज इट इज आई हैव इनफ लोड ऑन माई हेड. तो वॉट एवर आई सेड, गो बैक एंड, क्योंकि रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको, गो बैक एंड चेक इन द रिकॉर्डिंग. नो, फास्ट फॉरवर्ड करके कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा. एंड इफ एनीबडी हियर रिमेंबर्स, प्लीज शेयर व्हाट इज इट दैट ही इज आस्किंग अबाउट. आई डोंट रिमेंबर. Read all of Aaron Elliott's books. That is the best. अरे करवा लो फेक ब्रेकआउट, क्या फर्क पड़ रहा है? एकेडमिक है. इट्स प्योरली एकेडमिक. डजंट मेक अ डिफरेंस फेक ब्रेकआउट से. गो लुक एट दिस पैटर्न. व्हेन दिस पैटर्न इज गोइंग ऑन ऑल द वे फ्रॉम हियर, वो एक दिन का एक ब्रेकआउट से कोई फर्क पड़ता है क्या? फ्राइडे को व्हेन आई सेड मार्केट विल गो डाउन, ठीक है ना, उस टाइम पे ये भी बोला था हाँ आने के लिए एक बार ऊपर आ सकता है, फिर नीचे जाएगा. कोई रिकॉर्डिंग सुनेगा बराबर तो वो होगा. विल इट कम? बिकॉज द ट्रेंड चेंज डेट इज अराउंड द 30th. सो बिफोर दैट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच टू हैपन. बट राइट नाउ दिस इज द पॉइंट वेर यू स्टार्ट कॉलिंग, ओके टॉप इज ऑलमोस्ट इन. जब आएगा तब आएगा, जल्दी क्या है? दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द डेली चार्ट व्हेन आई सेड. सो फेक ब्रेकआउट आने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? इज इट गोइंग टू चेंज एनीथिंग फॉर अस? ये पैटर्न चेंज होगा? नहीं होगा. ये 3 जाके 5 बनेगा? नहीं बनेगा. जब तक ये 5 नहीं बना तो ये कुछ भी पैटर्न बना वो 3 ही होता है, 5 नहीं हो सकता. ये 3 हो गया. सो वंस ऑल दिस 4 आर इन प्लेस, दिस इट रियली डजंट मैटर व्हाट दिस एक्चुअली डज. इट जस्ट नीड्स टू रीच नियर द ट्रेंड लाइन, विच इज व्हाट इट डन. ऊपर जाएगा, जाने दो. नाउ tell me one thing, will you get a Nobel Prize if it makes a fake breakout on Friday and comes down? How does it matter? When you're looking at trading, the question always remains, how does it matter? Theory says, yes, there can be a failed breakout. Now, if you're going to wait and watch on this, what if there is no breakout and market opens gap down? Then you're stuck. You are not able to take any position because your stop loss will be far away. Now, one thing is for sure, according to the pattern, जो theory बोलता है कि even if it breaks out above, it doesn't make a difference. It will come down to test this level at least. So let it come down. यहां तक अगर और ले क्या रहे 18,000 का पुट, यहां तक भी नहीं आया, वो इधर तक भी आ गया, 18,000 तक 18,500 भी आ गया, तो योर पुट विल मल्टीप्लाई several fold. No, after that you just keep a few and then come back to sell whatever extra you have and just hold 1 or 2 which are basically free of cost, and then let it unfold.
Understand? So it is so simple. Ab expiry day here, this was required, the breaking of this point. Now once this point was broken, this is immaterial. This is the last 20-25 minutes, it's immaterial. This is Nifty expiry closing trades, where to close, done by the big option writers on where to close. So ultimately it should come around here. So calculated close आएगा 18,990 995 के आसपास. हो गया, एक ही मिनट बचा है. Calculated close 980 990 आएगा. 1 2 3 4 5. This is the average of these 6 bars. No, it's the last 30 minutes exponential average of the open high low close value. It is more or less, I don't know the exact one. Doesn't matter at all. Done, finished, end of the day. I hope you had something new to learn today. I had a nice time and I'm very happy that Nifty ended where it ended, 19,010. Because of some whatever reasons, I went a little aggressive in calling the top, but the top was called so close to the trend line, it didn't matter. It was just a day or two of waiting. Now I think the top is in place. Next week will be a different scenario completely. Let's see what happens. 972 close आया, 992 close आया, 972 आया. Could be wherever it is closed. I had a great time and आज भी पता नहीं चला दिन भर किधर निकल गया. Have a great evening and have a wonderful day tomorrow. And I'll hope to see you all on Friday, 30th. Have a great evening. Bye for now.